रोको निजीकरण के प्रहार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको। अफसरशाही के चंगुल से शिक्षा को आजाद करो, अफसरशाही के चंगुल से शिक्षा को आजाद करो। हे धर्म के ठेकेदारों, हे धर्म के ठेकेदारों, इनके सांप्रदायिक प्रचार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको। वैज्ञानिक जनवादी शिक्षा यही हमारा नारा है, सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा ये अधिकार हमारा है। वैज्ञानिक जनवादी शिक्षा यही हमारा नारा है, सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा ये अधिकार हमारा है। शिक्षा संकोचन के वार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको। मेहनत कश को शासक बारूद का ढेर समझते हैं, इसीलिए ये शिक्षा की चिंगारी से डरते हैं। मेहनत कश को शासक बारूद का ढेर समझते हैं, इसीलिए ये शिक्षा की चिंगारी से डरते हैं। रोको इनके शिक्षाचार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद। Thank you. Now our friends from Assam, they will sing a group song. This journey of life together, yours and mine, yours and mine. Oh, comrade, we have found new meaning of life. Welcome, my comrades, welcome, welcome, my comrades, welcome. Keujia jibonore jagriti sando ahe, ahe. জনতার অন্তরে অন্তরে আলোক বসন্ত হাহে হাহে প্রসারিত অরুণবাণী আগবাঢ়ে আগবাঢ়ে যুগাগ্ৰগামী তৰুণ সেনানী আগবাঢ়ে আগবাঢ়ে যুগাগ্ৰগামী তরুণ সেনানী আজি সমৃদ্ধ বেগে জাগে জাগে বিপ্লবী প্ৰাণ মুখৰিত দিশে দিশে অগণিৰ গান মুখৰিত দিশে দিশে অগণিৰ গান তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা ব্যৰ্থ ব্যৰ্থ আমি পালো জীবনৰ অৰ্থ অভিনৱ স্বাগত স্বাগত অতীত স্বাগত স্বাগত অতীত Welcome, my comrades, welcome, welcome, my comrades, welcome. তপন সামন্ত টিচার
Mr. Tapan Samanto will sing a song. Friends, I like to present before you Tagore song in Bengali. But before that, I want to place before you the spirit of this song. The song was composed in 1926 on 18th September, and you can easily understand. You can easily understand these and India's condition. Then we were under British rule, and our poet, through his songs and poems, wanted to awake us. And this song is a kind of that song, where he wanted to strengthen people. Don't get afraid. Don't pass your time in mere slumber. Get up and awake, and you will enlighten your country and the world. Now I start. The language is, I can forget. নাই নাই ভয়, নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে দ্বার, খুলে যাবে দ্বার, নাই নাই ভয়। জানি জানি তোর বন্ধন ডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বারে, নাই নাই ভয়, নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে দ্বার, খুলে যাবে দ্বার, নাই নাই ভয়। ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায় আপনা সুক্তি নিশি করিস যাপনা, ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায় আপনা সুক্তি নিশি করিস যাপনা, বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার, নাই নাই ভয়, নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে দ্বার, খুলে যাবে দ্বার, নাই নাই ভয়। জলে জলে তোর আছে আহ্বান, আহ্বান লোকালয়ে, চিরদিন তুই গাহিবি যে গান, সুখে দুঃখে লাজে ভয়ে। ফুল পল্লব নদী নির্ঝর, সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর, ফুল পল্লব নদী নির্ঝর, সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর, ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে আলো তো অন্ধকার, নাই নাই ভয়, নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, ভুলে যাবে এই দ্বার, ভুলে যাবে এই দ্বার, নাই নাই ভয়।
Our friends from Karnataka, they will sing a song. Song. Hello. We are from Karnataka. We like to present this song. It's a progressive song in Karnataka. We like to present for this program. ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಮನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಮನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವೆಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ಹೊಸ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ನೆಲದ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಮನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಗೋಳಿಲ್ಲದ ಗುಂಡಿಲ್ಲದ ನಾಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಗೋಳಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನೂರು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋಟಿ ಕನಸಿನ ಹಾಡು ಬರೆಯುತ್ತೇವ ಈ ನೆಲದ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ಈ ನೆಲದ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಂಡದ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಂಡದ ಕುಂಡ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮುಳ್ಳ ತುಳಿಸೇವ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ರಕ್ತಗಾಲಿನ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ನೆಲದ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ನೆಲದ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಮನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಈ ನೆಲದ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ
Friends, Dr. Jyotiraj from Kerala. Robert Sarkar from West Bengal. He will decide. After him, Dr. Jyotiraj will sing a song. I recite Rabindranath, কবিতা প্রশ্ন poem. ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠাইয়াছ বারে বারে দায়হীন সংসারে তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে বলে গেল ভালোবাসো অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে আজি দুর্দিনে ফেরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে এনেছে নিঃসহায় আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধী বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে আমি যে দেখলু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাসি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে তাই তো তোমায় সুধায় অশ্রু জলে যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো Thank you. Friends, you all know today is the birth anniversary of the great poet Rabindranath Tagore, a great humanist. From Civic Education Committee, today, as a part of our Dharna, we'll be paying tribute to this great man. You know, he dreamt of democratic, scientific, and secular education. In independent India, his dream was all will get education. It will be scientific and secular. But we are seeing how the National Education Policy 2020 is going against it. So from All India Civic Education Committee, so we will be paying tribute to him also. So before our program starts now, Dr. Jyotiraj from Kerala, he will present the song. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനും മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണു പങ്കുവച്ചു മനസ്സു പങ്കുവച്ചു
മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഹിന്ദുവായി, മുസൽമാനായി, ക്രിസ്ത്യാനിയായി, നമ്മളെ കണ്ടാലറിയാതായി ഇന്ത്യ ഭ്രാന്താലയമായി. ആയിരം യുഗങ്ങളിലൊരിക്കൽ വരാറുള്ളോരവതാരങ്ങളെവിടെ? മനുഷ്യൻ തെരുവിൽ മരിക്കുന്നു, മതങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണു പങ്കുവച്ചു, മനസ്സു പങ്കുവച്ചു. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. സത്യമെവിടെ, സൗന്ദര്യമെവിടെ, സ്വാതന്ത്ര്യമെവിടെ? നമ്മുടെ രക്തബന്ധങ്ങളെവിടെ? സ്വപ്നദ്രോഹങ്ങളെവിടെ? ആയിരം യുഗങ്ങളിലൊരിക്കൽ വരാറുള്ളോരവതാരങ്ങളെവിടെ? മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ മരിക്കുന്നു, ചെകുത്താൻ ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണു പങ്കുവച്ചു, മനസ്സു പങ്കുവച്ചു. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. Friends, now we will be starting our Dharna program. So first of all, I request Mr. Debashish Rai, one of our All India leaders of All India Civic Education Committee. So he will introduce about today's program. साथियों, ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी की ओर से जो मुहिम चलाया जा रहा है, ये जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से 2019 से जिसका ऐलान किया गया था और
2020 की 29 की जुलाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रयाण दिवस में जिसको लागू करना शुरू किया, फॉर्मली एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट, इसके खिलाफ 2019 से ही सेव एजुकेशन कमेटी, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी पूरे देश भर यही तहरीक चला रहा है, संघर्ष चला रहा है। उसी के क्रम में क्योंकि 2019 से ही और खास करके 2020-21 जिसमें आप लोग देखे हैं ये कोरोना महामारी के चपेट में जब आ गए थे देश, जब हमारी देश की जनता मर रहे थे, लोगों को राष्ट्र की तरफ से घरबंदी करके रखा गया था, जब किसी प्रतिवाद या संघर्ष करने का मौका भी नहीं था, उस समय साजिश के तहत पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। उसके बाद हम देखे हैं गवर्नमेंट, हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार इतनी जल्दीबाजी से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि ये चाह रहा है कि हमारी देश की अभी तक शिक्षा नीति में जो सेकुलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और जनवादी जो रेमनेंट्स था, अवशेष था, उसको खत्म करके एक जनविरोधी, एक धर्म के आधार पर या कम्युनलाइज करके, और ये शिक्षा नीति को, इस बार की शिक्षा नीति में जो प्राइवेटाइजेशन के होड़ चल रहा है, सरकार शिक्षा के बारे में अपना जो जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी का पल्ला झाड़ने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था, खास करके हायर एजुकेशन का जिस तरह वो प्राइवेट के हाथ में देने के लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है, उस समय कोरोना के नाम पर, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए साल भर इन लोगों ने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के दरवाजा बंद करके रखे थे। अभी भी आश्चर्य की विषय है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये ऑफलाइन क्लासेस ये बंद है। अभी तक विद्यार्थियों की तरफ से आवाज उठा रहा है, जैसे जेएनयू में कि ऑफलाइन क्लासेस लागू किया जाए, लेकिन सरकार ये करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग जानते हैं, कोरोना आने के पहले ही 2019 में ही हमारे राष्ट्रीय सरकार ने ये कहे थे कि हम आगे चलकर शिक्षा व्यवस्था को पूरा ऑनलाइन में ले जाएंगे, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे, 50% एजुकेशन ऑनलाइन में हो जाएगी 2025 के अंदर। ऐसा नहीं कि कोरोना के चलते ही आए हैं। 2020 के फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री के साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कल ये हमारी देश में आकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की 75,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा अगले 5 साल में ये डिजिटल एजुकेशन पर। तो इन लोगों की व्यापार के लिए
सरकार पूरा शिक्षा व्यवस्था को बहुत तुरंत ऑनलाइन मोड पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शिक्षा जो सिर्फ डिग्री हासिल करने का ये नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी को धीरे धीरे डिग्री प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री के रूप में बनाया जा रहा है। और ये ऑनलाइन शिक्षा जिस तरह बढ़ा दे रहा है, वो आगे चलकर हमारे देश में कैंपस कहकर कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हम देखें, जब भी राष्ट्र की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई अन्याय होती है, चाहे ये ब्रिटिश के शासन में हो, चाहे ब्रिटिश के बाद स्वतंत्र भारत में भी हो, हमारे देश के विद्यार्थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो कैंपस छोड़कर आकर के इस संघर्ष में उतरे थे, 2012 की आप निर्भया का जो मास गैंगरेपिंग हुई थी, उसके खिलाफ इस दिल्ली में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया और तरह तरह की कॉलेज से हजारों की तादाद में विद्यार्थी सड़क पर आए थे, महीना भर संघर्ष किए थे। और पिछले 2 साल पहले आप लोग देखे थे, जब सरकार सीएए, एनआरसी और एनपीआर लागू करने के लिए प्रयास कर रहे थे, हमारे सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ने सड़क पर उतारकर पूरा देश भर संघर्ष किए थे। इसलिए हम लोग जानते हैं, हमारी राष्ट्र, हमारी सरकार ये विद्यार्थी शक्ति को, विद्यार्थी ताकत को देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के जरिए धीरे धीरे हायर एजुकेशन की जो कैंपस, उस कैंपस बंद करने का साजिश चल रहा है। और ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ये होता है, सरकार नए सिरे से स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कुछ नहीं बनाएंगे और टीचर का भी नौकरी नहीं देंगे। तो ये सब साजिश है। आज जब हम हमारे ये देश की महान कवि ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर की ये बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है, उनकी दिखाई हुई रास्ते पर सेव एजुकेशन कमेटी धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक और जनवादी शिक्षा के रास्ते पर चल रहा है। और ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा खिलाफ है। देखिए, जबकि सरकार ऑनलाइन एजुकेशन और जंत्र के जरिए, टेलीविजन के जरिए, मशीन के जरिए शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। रविन्द्रनाथ क्या बोले थे? रविन्द्रनाथ बोले थे, शिक्षा दान की मतलब सिर्फ तत्व के आदान प्रदान नहीं है, एक जीवंत प्रक्रिया है, जिंदा प्रक्रिया है। रविन्द्रनाथ ये भी बोले थे, शिक्षा के बारे में हम लोग एक बहुत शब्द सीखे थे। हम लोग सीखे थे, इंसान से ही इंसान, मनुष्य से ही मनुष्य सीख सकते हैं। जैसे जल से ही जलाशय परिपूर्ण होता है, जैसे दीपशिखा या दीपक से ही दीपक जलता है, प्रज्वलित होती है। और प्राण से ही प्राण की संचारण होती है। गुरु और शिष्य की जो संपर्क, टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन, और उसके द्वारा जो शिक्षा कार्य, शिक्षा दान, वो एक सजीव देह जीव है, जिंदा जो शरीर है, उस शरीर के अंदर रुधिर धारा या ब्लड सर्कुलेशन जिस तरह होती है, जिसके चलते एक शरीर सजीव रहता है।
शिक्षा भी सजीव हो सकता है। और जंत्रों से नहीं, रविन्द्रनाथ बार बार बोले थे, वो सिर्फ कवि नहीं थे, इस देश के एक महान शिक्षक थे। वो तो विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाए थे, स्थापना किए थे। आज इस विश्व भारती विश्वविद्यालय का एकदम सत्यानाश हो रही है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो हम सभी से आग्रह करते हैं, आज की इस धारणा जिसमें करीबन 20 राज्यों से प्रतिनिधि आए हैं और हमारी देश की सरकार, हालांकि दुनिया में सबसे बड़ा जनतंत्र इसको कहा जाता है, इस शिक्षा को रेस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी बना दिया। रेस्ट्रिक्टेड। पुलिस ने हमें बोले कि 200 से ज्यादा तुम आप धरना में शामिल नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, मैं इसको ऑटोक्रेसी कहता हूं। और इसके जरिए उन्होंने विरोध को रोकना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन को भी रोकना, जो भी करे। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी इस मंच से सेव एजुकेशन कमेटी ऐलान करते हैं, सरकार जो भी चाहे, लेकिन इसके खिलाफ देश की जनता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे, सरकार की जन विरोधी शिक्षा नीति के खिलाफ हिस्सा लेंगे और देश के कोने कोने में फैला देंगे। आज की इस धरने में काफी माने जाने बुद्धिजीवी यहां शामिल है, 30 राज्यों की प्रतिनिधि भी शामिल है। गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन के कारण हम काफी संख्या में लोग ला नहीं पाए और ये गर्मी के चलते भी, जिस तरह अगर नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल ये होता और रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो हजारों की तादाद में हम इसको धरना कर सकते हैं, करेंगे भी, आगे चलकर हम करेंगे। लेकिन आज की ये जो टोकन प्रोटेस्ट है, इस टोकन प्रोटेस्ट के जरिए सरकार के प्रति ये वार्ता हम देना चाहते हैं, ये जन विरोधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके पूरा वापस लेना पड़ेगा। स्क्रैप NEP20, लॉक स्टॉक एंड बैरल, पूरा ये पूरा ही जन विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है। भले इसको अभी वापस लो। यही बात कहकर आज की इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी के सेक्रेटेरिएट से 3 लोगों के कमेटी बनाए गए हैं, जो लोग संचालन करेंगे। इसमें हमारे कमेटी के सेक्रेटेरिएट मेंबर प्रोफेसर तरुण कांति नस्कर, प्रोफेसर SH तिलागर और एक्स प्रिंसिपल शारदा दीक्षित भी रहेंगे। इन तीनों लोग चलाएंगे। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को संभालें। Friends, can you listen to me? Yes. Is it audible? Okay. Friends, we have started our Dharna program, and I request Professor Anish Rai, General Secretary AISCC, Professor Dhubajyoti Mukherjee, famous INSA scientist, Professor Narendra Sharma, please come to the dais. I request you all to come to the dais. And first, there will be slogan shouting, and I request
Assam squad. They will join here for slogan shouting. Assam. Nadaji, please come. Anandji. Long live Isaac, long live, long live, long live, long live Isaac, long live, long live, long live. Resist commercialization of education law, resist, resist privatization of education, resist, resist commercialization of education, resist. Long live Isaac, long live, long live, long live. Withdraw anti-people, anti-education discuss NEP 2020. Withdraw anti-people, anti-education discuss NEP 2020. Withdraw. Resist commercialization of education. Resist. Resist privatization of education. Resist. Resist commercialization of education. Resist. We want secular, scientific, and democratic education. We want secular, scientific, and democratic education. We want. Long live Isaac, long live. Long live Isaac, long live. Resist commercialization of education. Resist. Resist privatization of education. Resist. Resist commercialization of education. Resist. Long live Isaac, long live. Long live Isaac, long live. We want secular, scientific, and democratic education. We want secular, scientific, democratic education. We want. Long live Isaac, long live. Withdraw anti-people and anti-education disasters. NEP 2020. Withdraw. Long live Isaac, long live. Long live Isaac, long live. Long live Isaac, long live. खड़ी हो जाएगी। अरे सर प्लीज बैन कर दीजिए। Long live Isaac, long live. Long live, long live. Long live Isaac, long live. Long live, long live. Resist commercialization of education. Resist. Resist privatization of education. Resist. Resist commercialization of education. Resist. Long live Isaac, long live. Long live, long live. Withdraw anti-people and anti-education resistors. NEP 2020. Withdraw. Long live Isaac, long live. Long live, long live. We want secular, scientific, and democratic education. We want secular, scientific, democratic education. We want. Long live Isaac, long live. Long live, long live. Long live Isaac, long live. Long live, long live. Resist commercialization of education. Resist. Resist commercialization of education. Resist. Resist privatization of education. Resist. Resist communalization of education. Resist. Long live
Isaac, long live! Long live! Long live! Long live Isaac, long live! Long live! Long live! We want the scientific and democratic. We want! We want! We want! Friends, now I invite the General Secretary of All India Civic Education Committee, Professor Anish Roy, to come and deliver address, introductory address here. that मैं हिंदी में पूरी बात नहीं बोल पाऊंगा, so I will speak in English. Morning friends, on behalf of the All India Civic Education Committee and on behalf of its President, veteran journalist Prakash Shah, couldn't come because of his illness. I welcome and thank you all. You have come from all the way from different parts of the country to this Dharna. Why have you taken this trouble? It is because this is an issue on education which pertains not only to the present, but it influences, it affects generations to come. We have here a number of eminent personalities, educationists. They will honor us with their words and deeds. I won't go into details of the NEP 2020. I would like to point out, underline certain characteristics of the policy, which I think should be driven home, should point out why we are here for this protest. The NEP 2020 is basically fraudulent. It speaks of, it terms itself as national policy, but it has hardly taken the views of the nation, of its people, barring a few pliant and blind followers of the ruling power. The NEP 2020 is self-defeating. It vouches for ancient glory, parampara. It speaks of an Indian knowledge system, so-called Indian knowledge system, a misnomer by itself. At the same time, the NEP 2020 speaks of measures that are copied and pasted to the Indian education system from different foreign countries. For instance, FYUP, 4 years undergraduate program, the ABC system, the ECCE system at the earliest schooling, introduction of vocational education from the school to the highest stage of education, following the dictates of the STARS project sponsored by the World Bank, semester system, common university entrance test for
higher education, the recent joint and dual degree and training program suggested by UGC, all these are examples of copy pasting. The policy is misleading. It speaks of scientific paper of students, but neither the 500-page long draft NEP 2019 and the final 66-page long final NEP 2020, none of these two speaks even for once for secular scientific education. It virtually writes off the galaxy of educationists and scientists of the immediate past who had stood for modern secular scientific education and placed India in the roadmap of modern education. The policy is hypocritical because it says it is inclusive, but it wide opens the door of unbridled type of online education, direct or in the garb of blended mode of learning teaching at the cost of time-tested classroom teaching and teachers. Before me, Devashish Roy has elaborated on online education. You have heard that. By this, they not only rob education of its man-making, character-building essence, but gives away the education system to the corporate houses to run a lucrative education business through apps or otherwise. This only results in education being exorbitantly costly, prohibitive for majority of common students. The policy doesn't spell out how the government plans to fund education, but declares public and private investments at par, thus laying the red carpet for private investors, a total corporatization. The policy is a cunning design. It speaks of, it pledges light but tight regulations. But in the name of one nation, one syllabus, one entrance test, and lately, Hindi as the one official language and the likes, the government moves ahead to implement the policy, centralizing all power, all processes, all measures, a feature that humankind has already seen in what we know as fascistic countries. Glimpses of what may happen, Devashish mentioned it, are evident from the cases of the JNU, where pro-ruling authority and the student wing of the ruling power played havoc. From the totally autocratic role of the VC of Vishwalti, founded by none other than great poet Rabindranath Tagore, whom we paid tribute to, or in the blockade of research in Sagar University in MP. These are only a few among attacks, many traits of the NEP 2020. Knowing it in full, anybody with the slightest concern about prevailing education systems and scenarios cannot but feel shocked at the calamitous effect the NEP 2020 is going to bring about. Undisputedly, it needs to be scrapped, what Devashish said, lock, stock, and barrel. But along with this, I would like to point out another important aspect. People are not accepting this policy. That is evident whenever AISC, AIDSO, or some such organizations would meet people with their appeal to oppose and demand scrapping of NEP 2020. Even the fighting peasants who braved all odds for months together in Delhi and around, common villagers, the hapless migrants, ruined
for life, jobless workers, and such others are coming to realize how this policy will affect them. However, it is also a painful reality that very few apparently pro people, teachers, students, educationist organizations, even any so-called mainstream political organizations are making any serious move for raising the movement for the same purpose. Those who do, of course, in face of people's wrath against NEP 2020, they tend to confine themselves on constitutional aspects of the different damaging measures of the NEP 2020. They never demand total scrapping. This situation places AISCC or those fighting for total scrapping of the NEP 2020 in a unique position, a position of a courageous, audacious singularity who have stepped ahead to accomplish a task that history has bestowed upon them. On their shoulder, this audacious singularity in the fight for the cause of genuine scientific, secular, democratic, and universal education places additional responsibility. So the fighters for genuine education today must spread out in the grassroots all over the country, close their ranks by developing struggle instruments, that is by developing struggle committees, must reinforce their organization by raising bands of dedicated volunteers, but it must extend their hands to invite all who are ready to join the struggle with sincerity and earnestness. The need of ours is to realize that there is no way out but launching and strengthening the movement. The historic Kishan movement, the brave fight of the Anganwadi workers, the recent Dharna of the AIGSO in Delhi itself, and all such events now coming up clearly attest to this truth. So I appeal to you and your acquaintances to realize that, as Devashish pointed out, the AISCC pledge is to rise to the occasion. We need your unstinted support to develop the movement into an effectively formidable one. Hopefully, we will bring the support of you, the people. We know it is a people's issue, and people are with us. We only need to move to them, organize them, and imbue them with the noble cause for fighting for education. With these words, I want to end again thanking and welcoming you all. Thank you. I thank Professor Anish Rai for his very illuminating introductory speech. Friends, you know that some front-ranking educationists and intellectuals committed to join this program of Dharna at this Jantar. Already who have been present here: Professor Sachidananda Sinha, Professor School of Social Sciences, JNU, Professor Maria Charles, Dr. Maria Charles, Educationist, Secretary, CBCI, Professor Miratul Nahar, Educationist, Professor Alamma Prabhu Hectaduru, Educationist, writer, retired principal, Karnataka, Dr. George Joseph, Educationist from Kerala. I request all of them
to come over to the dais. गुड मॉर्निंग टू ऑल। साथियों, जैसा अभी अनीजा ने बताया, एक बहुत ही बड़े संघर्ष का आगाज ये हुआ है और उस संघर्ष के आप साथी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं और लंबे समय से चल रहा है। ये एक पड़ाव है जिससे ये संघर्ष और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और इस सरकार को ये एंटी पीपल एंटी एजुकेशन पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी। तो अभी इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में शुभा दीक्षित जी एक सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगी। आई रिक्वेस्ट टू मिस शुभा दीक्षित कम ऑन द। Today is birth anniversary of great educationist and a poet and philosopher Rabindranath Tagore, and this song is dedicated to, composed by him. That song which is going to be presented by Shubha Dikshit is composed by him, which she is going to present. Thank you. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একটা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফেরাই সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খোলে, তবে মুখ পেতে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায়, যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পাথর কাটা তো ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা ডলো রে,
অতই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি আলো না ধরে, যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে, যদি ঝড় বদলে আধার রাতে দুয়ারে ঘরে, যদি ঝড় বদলে আধার রাতে দুয়ারে ঘরে, তবে বাজনলি আপন বুকের পাজর চালেন নিয়ে একলা জ্বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। It's a very appropriate song composed by God. If anyone doesn't respond to your call, then go ahead alone. This is the theme of the song, and this is very appropriate for our movement program. Now, I want to tell you one thing, that is, they have restricted our Dharna program for 200 audience only. And you know, this government just passed this education policy, NEP2020, through a cabinet decision. They didn't dare it to the place in the parliament event. They didn't care to take the opinion of the people. And they did it when there was pandemic and none of us couldn't go out in the streets to oppose this policy. And when the pandemic is over, when the people will come to the streets to protest against this, then they are restricting these dharna for 200 people only. And you just see the situation of Jantar Mantar. They have placed the guardrails there on both sides so that you cannot do anything. You cannot exceed the gathering beyond that. So this is the democracy they are conducting, very controlled democracy, very centralized, and they are opposing any form of dissenting voice. This is the position of the government now in the center. Now I request on behalf of this conducting committee, Professor Sachidananda Sinha. He is Professor, School of Social Sciences, JNU. He has been with us in this education movement of AISCC. I request him to speak in Hindi. धन्यवाद। क्या देख हुआ है कि मैं हिंदी में अपनी बात को आपके समक्ष रखूं, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद हिंदी नहीं समझते। अनिश दा को हिंदी समझ में आती है, बोल नहीं पाते हैं, और मैं बांग्ला समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता। বুঝতে পারি, বলতে পারি না।
उसका उसका वजह भी है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार के बगल में बंगाल है। आधी जनता बिहार से बंगाल जाती है काम की तलाश में, और जब वो आते हैं तो वो बांग्ला थोड़ा सीख लेते हैं। तो ये जो मिली जुली जो संस्कृति है, वो संस्कृति जो लोगों की संस्कृति, वो संस्कृति जो लोगों के मेहनत से खून पसीने से सींच के तैयार हुई है, जिसको आप किसी एक वर्ग या किसी एक विशेष समुदाय की परंपरा नहीं कह सकते। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका पूरी तरह से खंडन कर, और शायद हम और आप ये सोचे बैठे हैं कि रिफॉर्म तो होगा, और जो सत्ता आती है रिफॉर्म तो करती है। रिफॉर्म है या हमको पीछे 2000 साल या 2500 साल पीछे धकेला जा रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर हम आज नहीं इस बात को समझते हैं तो शायद जिस जनरेशन की हम दुहाई दे रहे हैं, आने वाले भारत, कल के भारत के जिस जनरेशन की बात हम कर रहे हैं, वो भारत हमें कभी माफ नहीं करेगा। The challenges are extremely serious. We should not get carried away by the fact that we were only allowed 200 people today. सवाल संख्या का नहीं है, भीड़ का नहीं। सवाल ये है कि हम तथ्यों को और तथ्यों को मूल्यांकन करें। क्या मूल्यांकन करें? उस 500 पन्ने की ड्राफ्ट पॉलिसी की बात कर रहे थे अनीश भाई, और जो 66 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम गहराई से पढ़ें और समझें कि ये हमें क्यों पहले के कल के दिनों से बेहतर है या उससे कहीं और हमें ले जा रहा। शिक्षा का अधिकार बहुत मुश्किल से, काफी संघर्ष के बाद हमने 2009 में, उसके पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा होता था। सरकार कोशिश करे, कभी हमें वो शिक्षा का अधिकार हमें दिया नहीं गया। जब 2009 में शिक्षा का अधिकार आया भी, तब तक एक तरफ सरकारी विद्यालयों का विघटन हो रहा है और दूसरी तरफ निजीकरण की प्रक्रिया जो है ना बहुत तेजी से चल रही है। जो कॉन्टेक्स्ट आपको समझने की जरूरत है, हम सबों को समझने की जरूरत है, स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि साहब हमको एक अप्रमाणित तथ्यों से परे एक सिलेबस से मुखातिब होना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का सिलेबस होगा। क्यों होगा भाई? जब पूरे हिंदुस्तान में एक तरह के लोग नहीं है, जब एक तरह की भाषा नहीं है, जब एक तरह की संस्कृति नहीं है, और सारी संस्कृतियों ने बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान को बनाने में या जो समाज को बनाने में अपना योगदान दिया है, तो क्रिएटिविटी किसी एक भाषा या एक वर्ग की धरोहर नहीं है, उसकी बपौती नहीं है। It belongs to the people of this country who fought for the independence against the British, and they fought also in the post-election, in the post-independence period against feudal order. जो सामंती व्यवस्था रही है हमारे देश में, उससे भी हम लड़ते रहे, यही लोग लड़ते रहे। और उस लड़ाई का एक सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जो सरकारी विद्यालयों से पढ़ के आए, जो पब्लिक एजुकेशन के बैकग्राउंड से पढ़ के आए, सामाजिक और आर्थिक रूप से मोबाइल हुए। हर वो उस वर्ग के अंदर वो आशा की किरण नजर आई कि वो भी अपना कल बेहतर कर सकता है, वो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता है। और अब ये सरकार उन गुलामी की जंजीरों को फिर से, उन बेड़ियों को हमारे पांव में डालना चाहती।
आप कहेंगे आपके कैसे कह सकते हैं साहब? देखिए, आरटीई की बात आप करते हैं, राइट टू एजुकेशन, बहुत खुले शब्दों में कहा इन्होंने, कहीं राइट टू एजुकेशन का मूल्यांकन नहीं किया, उसकी कमजोरियों को नहीं देखा। एक तो ये उसी तरह का डॉक्यूमेंट है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट और कहानियों को हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि किसी को ख्वाब आया और किसी ने भगवान से बात की और भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। इस डॉक्यूमेंट में किसी भी स्टडी का कहीं कोई हवाला नहीं है। अनिता ने कहा द सो कॉल्ड परंपरा, सो कॉल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हर समाज का अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता रहा है, लेकिन अगर वो एक ही जगह खड़ा हो जाए, ये मान के कि ये शाश्वत है और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, तो गंदे नाले के पानी की तरफ उससे बदबू आने लगती है, और वो बदबू हमारे समाज में हजारों साल तक रहती है। आप कहेंगे वो बदबू क्या है, घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मुख्य बात आपके सामने रखना चाहता हूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अंदर जो हमने सेकुलर लिबरल एजुकेशन की नींव रखी इस देश में तमाम विरोध के बाद, और वो विरोध कभी ब्यूरोक्रेसी से आती है तो कभी विरोध हमारे जनता में भी लोग इस तरह के हैं कि वो शायद दूर तक नहीं समझ पाते, और उस तमाम सारी चीजों के बावजूद जब हर वर्ग मोबाइल हुआ, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली मोबाइल हुआ, आज की तारीख में देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में नेट गेन हुआ है। सबसे पिछड़ा तबका भी आज हायर एजुकेशन में शरीक हो रहा है। तो सारे जो अवसर, एक तो अवसर बहुत थोड़े, और वो जो भी अवसर थे जिससे कि मेहनत कश माँ बाप ने अपने बच्चों को आगे पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, उनके रास्ते बंद किए जा रहे। आज जब हम यहाँ बैठे सभा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने NEP 2020 का मूल्यांकन की भी मीटिंग चल रही है, और उसमें उन्होंने एक प्रमुख बात की, वे कहा कि अब जमाना है हाइब्रिड एजुकेशन। अब ये बताइए कि हाइब्रिड एजुकेशन का तो हम नतीजा देख रहे हैं, जबकि करीबन 250 मिलियन बच्चे पेंडेमिक के दौरान स्कूलों से बाहर हो। इसका कहीं मूल्यांकन, इसका कहीं आंकड़ा हमारे देश के किसी भी राज्य में नहीं है। और एक ऐसे समय में जब बच्चे स्कूल से बाहर हो रहे हैं, जहां और ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है कि जो छोटे छोटे समूहों में बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई, उनके सीखने की व्यवस्था कर पाए, और भी डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर की जरूरत है, तो हमारी सरकार स्कूलें बंद कर, रैशनलाइजेशन के नाम पे जहां बड़ा खर्च हो रहा है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे बच्चे नहीं। आप भी और हम भी इसमें इस हवा में बह जाते हैं। कोई पूछे बच्चे क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए। गांव में तो बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे नहीं। स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं है कि स्कूल में आपने शिक्षक अपॉइंट नहीं किए। 5वीं जमात तक की पढ़ाई जो है ना, एक शिक्षक चला रहा, और फिर एक सरकार का जो नुमाइंदा है, एक प्रथम बहुत दिनों से बहुत सारी रिपोर्टें पैदा करता है, कहता है हमको मल्टी ग्रेड एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही विरोधाभास है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि जब शिक्षा का प्रसार हुआ है पिछले 5 साल में, तो और संकुचित हुआ है, लेकिन जो भी प्रसार हुआ वो गांव गांव तक पहुंचा, और उसने गुलामी की जंजीरों को कमजोर किया, और उससे जो प्रॉपर्टीड क्लास है वो हमेशा
से प्रभावित है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित, क्योंकि उसकी बेकारी, उसकी हुकूमत नहीं चल पाई। मनरेगा ने वही काम किया। उसने कहा भाई ये रेट हो गया लोकल। इसीलिए तो जैसे 14 में नई सरकार आई तो पहला एजेंडा था मनरेगा को तो खत्म करेंगे, खत्म नहीं कर पाए, उनकी भी अपनी दिक्कतें। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें, और ये कह रहे हैं कि हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करेंगे, हम बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम रखेंगे, 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा, 1 साल में कोई सर्टिफिकेट लेके चला जाएगा, 2 साल में कोई डिप्लोमा लेके चला जाएगा, तो जाएगा कहाँ, उसको लेगा कौन? दिक्कत ये है कि तुम जाओगे नहीं तो हम तुम्हें धक्का देके बाहर करें। Nobody drops out from education, they are pushed out। इस बात को अगर हमने नहीं समझा और इस नैरेटिव में हम फंस गए कि बच्चे के घर में खाना नहीं है, बच्चे के माँ बाप के पास आमदनी नहीं है, इसलिए वो ड्रॉप आउट हो रहा है। वो जमाना था 60 के दशक का, 70 के शुरू के दशक। अब कोई भी बच्चा भूखमरी की वजह से बाहर हो रहा हो, बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि भूखमरी पे हमने काबू पा लिया, लेकिन व्यवस्था अपने आप को इस तरह से तैयार करती है कि ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ, वो जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहे, वो अपनी जगह पे खड़ा रहे। ये जो लड़ाई, ये केवल शिक्षा नीति के खिलाफ की लड़ाई, क्योंकि केवल एक शिक्षा एकमात्र वो एलिमेंट है जो इस मोबिलिटी के प्रोसेस को प्रशस्त कर सकता है। लेकिन अगर वो मोबिलिटी एक ऐसे करिकुलम से आएगा जो हमको विश्वास के रास्ते पे ले जाएगा, जो हमें ज्ञान और विज्ञान के रास्ते से दूर करेगा, तो ऐसी व्यवस्था का भी हमें पुरजोर मुखालफत करना। तो हम स्कूल से लेके हायर एजुकेशन के तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी किरण दिख रही हो आपको, तो आप बिल्कुल अपनी बात यहाँ पे ला कर रखें। हम यहाँ विमर्श के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप सुनने के लिए नहीं इकट्ठा हुए, और मैं बोलने के लिए नहीं यहाँ पे आया। इस संघर्ष में आपके साथ चलने के लिए आया, और ये चलना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम उस नतीजे पे ना पहुंचे जहां पे एक जनवादी प्रगतिशील शिक्षण की व्यवस्था हो, जहां पे हम एक तरफ तो कहते हैं कि साहब गांव का हर स्कूल जो है ना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चलाएगा, दूसरी तरफ हम गांव के उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में ऐसे लोगों को रख देते हैं जो कि ना गांव के हैं, ना गांव के लोगों से उनका कोई सरोकार है, और जिनका सरोकार है उनको हम बार बार कहते हैं, पहले वोट के लिए मना करते थे, अब हम उन कमिटीज में उनको बैठने से मना करते हैं। तो लड़ाई तो गांव से शुरू करते, यहां पे हम अपनी बात जोर से कहेंगे, कितना दूर पहुंचेगा? लाउड स्पीकर है, शुक्र है कम से कम इसलिए लाउड स्पीकर बंद नहीं हुआ, जहां तक पहुंचे। लेकिन जरूरत इस बात की है, और मैं आह्वान करना चाहूंगा अपने नए यंग फ्रेंड्स से, गांव गांव जाना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट पे लोगों ने अपने विचार रखे हैं, डॉक्यूमेंट को आप सभी अपने अपने गांव में मल्टीपल कॉपीज लेकर जाएं। हिंदी में चाहे जिस भाषा में भी हो उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। ये अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, रीजनल लैंग्वेजेस में हमको ये बात रखनी पड़ेगी, और हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि एजुकेशन अभी भी, जो एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो प्रोविंशियल स्टेट की जिम्मेदारी ज्यादा है। सेंट्रलाइजेशन की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए मैं आज के दिन स्टालिन साहब का नमन करना चाहूंगा कि साहब कम से कम उन्होंने हिम्मत तो दिखाई कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट वहां का राज्यपाल ना करे। उसका नतीजा क्या है, अच्छा या बुरा क्या है, वो देखेंगे। लेकिन हमें मालूम है किस तरह के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है और किस तरह से होता है।
कितने उसमें वाकई प्रखर विद्वान हैं और जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिस्टम में पढ़ाई की हो, मुझे तो शक लगता है। मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं बने हुए, जैसे कि हमारे देश में अभिमन्यु को बहुत सारा ज्ञान माँ के पेट से ही पता चल गया था, वैसे ही है ये भी। वो ज्ञान लेके ही पैदा हुए हैं और हम ज्ञान पाने की कोशिश में, फर्क है। हम आज उस कोशिश में ज्ञान को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बेहतर है कि जो ज्ञान लेके पैदा ही हुआ है वो बेहतर है। इस लड़ाई को, ज्ञान पाने की लड़ाई को हमको बेहतर करना। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे वक्ता हैं और अंग्रेजी में 2 लाइन कि this is the document which I call is the 21st century document of Manusmriti. If you want to see Manusmriti in the 21st century avatar, please read it and follow it. Some of us may still be believing in Manusmriti. We've got to throw that document along with this current document because it restricts us. It restricts women. It restricts the child. It restricts all those who perhaps have been the real builder of this nation. उनके अधिकारों की रक्षा के लिए केवल एक ही उपाय है, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के परचम तले हमको इसको और भी ज्यादा इस संघर्ष को गहराई तक ले जाना पड़ेगा, उसके उस लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। We had benefited. My generation benefited from public education. If my generation had to go to private education, perhaps we wouldn't have been here. Some of us may have forgotten. We may have become insensitive. जो कि एक elite का एक नेचर होता है कि जब वो अपने सफरिंग से उभर के आ जाता है तो अपने साथ वालों को भूल जाता है। हम में से बहुत सारे लोग शायद भूल गए होंगे क्या होगा, अब जो होगा देखा जाएगा। बाल तो सफेद हो ही गए, दाढ़ी भी हो गई, लेकिन ये कहना काम, केवल एजुकेशन ही वो माध्यम है जिससे बदलाव आएगा। और तब जबकि हमारी सरकारें 3% से ऊपर जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करने से कतरा रही हैं, जबकि हमारी सरकारें सब चीज जो है ना प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहती है। तो इसका विरोध बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चों को, आने वाले जनरेशन में सबों को समान अवसर नहीं मिलेगा। अवसर की समानता केवल कागज पे हो तो शायद बात वहीं पर रुक जाएगी। इसको गली मोहल्ले तक पहुंचना पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Sinha, for your illuminating speech and call for the movement. Now, I like to call Mr. John Doyle, well-known journalist and human rights activist, who is present here. I call Mr. Doyle to come over to the dais. Now, one announcement.
that we sought appointment from the Minister of Education, Government of India, very early. A few weeks back, we sought his appointment. But today, we came to know that only one officer will be there for receiving the memorandum. And he has got no time to meet the representatives from all over the country, from all the states. Now, I want to announce that Sajad Khan, Ramavata Sharma, and Vishwajit Mitra, they will go to the office of Ministry of Education and submit the memorandum. Next, I invite Professor Pradeep Mohapatra from Assam to deliver an address here. And I would request the dignitaries on the dais to limit their speech within 10 minutes for want of time for the completion of the program here. I'm sorry for that because we have to finish the program within a particular stipulated time. So I would request the dignitaries to limit within 10 minutes and speakers from respective states to limit their speech within 2 to 3 minutes. Now, Professor Pradeep Mohapatra from Assam. Members of the conduction committee who happen to be the members of the secretary of India, secretary of India Selection Committee. Okay. And eminent, very known educationists. The number may be few, but they are very much known, like Dr. Sinha and others who are very relaxed. And fighting friends, participants, who have been here representing their respective states. Friends, our beloved General Secretary, Professor Anis Rai, and a very brief, but I would say very comprehensive speech, has quite rightly outlined and underlined those dangers of NEP20. The dangers that NEP20 is fraught, and which in fact will pave the way for a future with no education in the real sense. That's the reason why, as rightly has been said by Professor Satyanarayana Sinha, Professor of Social Sciences, JNU, we have to do away with this. What the adjective I should actually is use here, I don't know. It doesn't come to me immediately. This document that is fraudulent, I'm repeating the words said by our beloved General Secretary. This is guiding. That's a document that the ruling dispensation at center, along with its cohorts in different states, who in fact are the servitors. They are the servitors of the ruling class. So they have, conspired, and it's a part of that conspiracy to cripple civilization in the name of giving a new education policy that they call national, which in fact has not involved, so to say, any section of the section of people in the country.
for debate, discussion, deliberation of whatsoever. Even no discussion was there in Parliament. So I have been given this time, I think. I have to conclude within that limited period of time. So our experience, that also has been said, I mean, that has been pointed out by a respected member of the All India Secretary of ISEC, All India Secretary Committee, Devashish Rai. The response we have been receiving from various sections of people, particularly the senior section of people that ISEC has been receiving, we received in course of our preparation for this program. In fact, as I've already been told here, only 200 friends have been allowed to be present together here. Had there been no restriction, it would have been at least several thousands. So in course of our preparation, that means we actually carried the message of ISEC to different states. I'm talking of Assam and the neighboring state Manipur, where people, wherever you went, they simply were shocked because unfortunately there was no discussion or debate or deliberation either in the print media or in the electronic media or by the government or by other organizations as ISEC has been doing. Very few people still know the real dangers that NEP20 is producing. So the moment we clarify our points, with some, at the same time with some set of spirited zeal, they responded and they extended not only their moral support but all sorts of support to see to it that NEP20 is scrapped, is withdrawn under the pressure of democratic movements to be built up all over the country in different states. Hence, as the time given to us is quite limited, with just one appeal, I would like to conclude my short speech. That those who know what NEP20 is, ever since the draft document NEP2019 was published, they know it and they have been opposing it, most of them. And the rulers have their friends also. Naturally, they will be speaking good of it. But the senior section people, the educational people, the well-meaning people, people with pro-education mentality, they are doing their bit, contributing, trying to contribute, they are contributing in their own respective ways. But those who have still not responded through this program, I, on behalf of All India Civil Defense Committee, would like to appeal to all those people, those teachers, those friends belonging to the teaching fraternity, to come out, because we should do things following the examples of what our Christianity did, so the benefits didn't go to them as it should have done. There's just another side of the story. So following that example, if students, teachers, parents, educational people in this country get united, then there will be no option, but there will be no option left for the government, the ruling dispensers, who have their own desire to impose, they have already imposed it, but there will no option but to withdraw it, which is the need of the hour. Last but not least, number, as has been pointed out by a respected speaker, is not decisive. All of us know that very, very famous statement made by the English philosopher to an extent, economist, John Stuart Mill, social thinker, that one person with belief, I quote Mill, one person with belief is equal to 99 who have just encouraged, meaning only self-interest. So let's continue. I didn't mention my experiences. I'm in Manipur. We had been to Manipur, being invited by our friends there at Nepal. People are tremendously responding.
just half an hour, there's a press meet they organize, just to let you know the response of the people in different parts of the country where we have been able to carry the message, how they respond. There is no media in the elected that has not given governance to this press meet. So point is, where to decide. We have been left with two options. Either to accept it by remaining silent, accept any responsibility, and thereby allow not only the present generation, but the generation of students to come, used to come, to be people intellectually, morally, and in other ways too, or to second option, fight back. Such a document has no place in a civilized country, in a democratic country, and hence we are seeking that government takes it back from where. Thank you. Thank you, sir. Now, I request to Mr. John Nair, well-known journalist and human rights activist, to speak about this NEP 2020 and ask the people to support this movement. Good morning, and congratulations on having first protest on the NEP after the ending of the COVID lockdown. Before COVID began 2 years ago and imposed, among others, a blanket of fear on the people, we have been protesting against the draft new education policy for 4 years, 5 years, ever since the idea was mooted at this very spot, very large rallies, as you could have imagined. A very large rally was organized here by the Tamil Nadu Education Group. In thousands, people came from Chennai, from Madurai, from Coimbatore, with the drums and the drummers, professors and students, and they marched on Parliament Street behind this. The protest, therefore, against NEP is from the moment it was conceived, because it was conceived in sin. When the NEP first draft was made available, we set up a small committee to investigate how this came into being. The Vice Chancellor of Jamia Hamdard, many others, CPM, CPML, CPI, parts of the Congress, we set up a group to investigate the policy. Not to investigate it, not to examine it, but to investigate it. And part of the investigation was to use modern instruments of information technology to find out where was the draft coming from. You know, this process is used to find out copyright violations, to find out how vice chancellors get their PhDs by stealing the PhDs of their students, the same process. And we discovered very large chunks, crucial chunks of the NEP were from a document produced by the RSS in Madhya Pradesh about 8 years ago. It took paragraph to paragraph. The roots of this NEP, therefore, are not, as you said, in right of education. Professor, I was congratulated for an excellent sweeping narrative. It's not to further the ends of the NEP, to make education available to the poorest of the poor. It is not meant to take India to the stars. I was student of physics from the Department of Physics and Art
astrophysics of Delhi University. It is not meant to encourage creativity, to encourage research, to encourage curiosity. It isn't meant for any of that. Two small instances I want to give you. Last 2 days in Delhi newspapers, an advertisement is coming from the government of Haryana for the auction of plots for schools. Those plots are to be auctioned, and we know from our experience in Delhi, only the super rich will be able to buy those plots to set up pre-primary, primary, and high schools, where the toilets will be air conditioned, where they will teach you shooting, where they will teach you chess, and possibly teach you horse riding. But where the teachers will have to sign the register for 50,000 rupees and get 25,000 rupees in their hand. In Punjab, next door, is a university called the Lovely University. Started by a person who used to sell something, sweets. That person's son has just become a member of the Rajya Sabha on behalf of the Aam Aadmi Party. That university has 33,000 students. That's X number of times of the students of Delhi University. What will they do? What are they studying? What is the curricula? How much fees are being charged? How much salaries the teachers are getting? Nobody has a clue. For all that is almost secret. Trade unions, of course, are not allowed there. So there is no quota, there is no JNUS. There are two aspects of commercialization. I want to give you concrete examples. Two of us are here from the Catholic Church. Let me give you 2 minutes on what it really is impact on minority, which is also a consequence of an impact on federalism. Federalism has been shot down by Mr. Modi on every count, from law and order to food to water to air to food, deserts to forests, but in education. The impact of the attack on federalism is the most acute. Because a third of the population, if not 3/5, are students in villages elsewhere. And it impacts all over. For the minorities, the threat is on every basis. Apart from all the implications, the dilution, the erosion of Article 25, 30, and Article 25. The right of minorities to run their own education institutions. In the Minorities Commission, there is no Christian member. In the Minorities Education Commission, it's a national commission governing minority rights, there is no Christian member. There is also no Muslim member, no Sikh member. So in effect, the nodal agencies meant to oversee any transgressions of the central government have not only been castrated, they have been killed. They don't exist. They exist only on paper. So you don't know what are the implications of this, but we have not had a chance to explain. I myself was part of a very small delegation which met Nishank, the last education minister. You are saying that not even the education sector is willing to meet you. This is what we have been doing for the past 6 years. They just do not want any cross-examination. Mr. Modi doesn't like a press conference because some person will ask him a question. The education secretary and the education minister don't want to meet a wide variety of teachers, professors, students, school owners, minority school system administrators. They don't want to meet because we'll ask questions based on an experience. And where this policy comes in conflict with a life experience, with a living experience. You say some local group will monitor the school. What happens if you are a minority school, if you're a Catholic school? I'm a Catholic. Who is the local committee? The local committee will be made up of local Akhil Bharatiya Vijayati Parishad, Bajrang Dal. All these schools will sit on the head of the father as it is. They're saying the father cannot wear his cassock, the school cannot have a grotto,
you must compulsorily have a statue of the Vidya Saraswati Devi. I have no quarrel with Vidya Saraswati Devi, but the compulsion, the terror, known as the terror on the educational rights of minorities, of Muslims, of Sikhs, of Christians, of linguistic minorities. Because Article 30's rights on minorities are not limited to Christians and Muslims. They are also linguistic minorities. If you are a Telugu in Delhi, there are two good Telugu schools here. If you are Malayalam, there's an excellent Malayalam school here. If you are Tamil, there are 5 Tamil schools here. What will happen to the rights of them? What will happen to people who migrate or work? It's going to kill all those rights. Lastly, and let me tell you this, Professor Sinha mentioned the vocationalization and almost the compulsory expulsion of children from the street. Who do you want people to go up and get their PhD in astrophysics? Who do you want people to go and get their PhD in biochemistry or biology? Who do you want them? Only the sons of the elite? Only the sons of the super rich? Only the sons, as it is, the super rich can buy an MBA by donating money even to Harvard. Who do you want people on? As he said correctly, I think he said it in a way that people will understand. You want a repeat a reimposition of Manusmriti, where education is not a right of the common people. It is something that is yours because you have a reservation. Not like the STs, not like the SCs, not like the OBCs, not like the educational, the economically weaker sector. You have a right, you have a reservation in a formula that nobody understands, but your mother, your father, and the Prime Minister of India. This cannot be. If India is to be a democracy, if people of poor people, of soldiers, of policemen are to study and try to be somebody, this education policy is not that. We want education policy which is egalitarian, which is of the people, for the people, and therefore by the people. And let all of you decide what the education policy of India to be. It will end up in one of these scraps of paper, which will enrich the rich, which will make school plots like hotel plots available only to those who have tens of hundreds of crores of rupees, and not to somebody like me and father who want to run a school for the poor, where fees is at a minimum, where lunch is provided and it is 1 egg and not some piece of glass. I thank you very much. My apologies. I've written a book with Father Sonny Thomas, who was the Jesuit in charge of education. We edited this book. It exposes all this. It was 2 years old. COVID, in a way, killed it. But the idea, and some of the best brains in education wrote it. I wish I brought it with me, but I can't carry it with me. We must once again review this at the moral level, at the state level, at all levels that is possible. I thank you very much, and let me conclude by once again congratulating you for being the first bunch of teachers, academicians to once again assert your right and occupy the space meant for you to get your voice heard by India, by the President, and by the Parliament. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Jantar, for your illuminating speech. Now I call Professor Miratul Nahar, who is former Professor Victoria College, Kolkata, and writer. I call Professor Miratul Nahar. I must congratulate All India Save Education Committee to arrange for a meeting on a day in which Rabindranath Tagore Thakur was born. He said, walk alone in your
with your fighting spirit when no one comes and joins you. Not only that, he founded an educational institution which could have been model educational institution for the whole India, all Indian countrymen. He wanted his educational institution to combine both Indianism and also to get lesson from Western education. He named his educational institution Vishwa Bharati. Vishwa means world, Bharati means Indianism. He wanted his countrymen that the world will come to take lessons from Indians, and also the Indians will take educational lessons from Western country or the whole universe. So he named his institution Vishwa Bharati. But all went in vain. This educational institution has been in a ruining way, moving on by the countrymen, by the rulers who are trying their best to win this educational institution. Now, very few words I have to say here, not much to be said because in between, any explanation, descriptive explanations of the national education policy which we are talking about made. I will say in one word, that I make a remark in one word. The policy is paradoxical in many ways. Why paradoxical? Because certain issues can be raised against it, which made us or has made us skeptical about the policy to be materialized in our country. It is called national education policy, but we must ask what kind of nationality it aims for. Whether the nationality is Indian nationality or it is Hindu nationality. It wants the countrymen to follow this policy, educational policy, so that they will be true human beings as well as truly global citizens, not like takeoff. How it can be possible? You will be able to, you are supposed to follow all the blind, fundamental, cultural, religious traditions, and also to develop a scientific scientific mind. And you also want to digital online process in learning. How all these are combined? Is it at all possible to make reconciliation of these two kinds of policies? Either you go in modernization, either you follow the modernization in the education policy, or you follow the traditional, so-called traditional blind faith we have so long we the Indian have emphasized on, and we are lagging behind. So either we'll have to move ahead or we'll have to lag behind. The conciliation of these two is not possible. So I like to say this policy is paradoxical. It wants education and learning as well as learning. Education will give learning and lifelong learning ability to our countrymen. But how it is possible, the ways it has observed are all paradoxical. It's not possible to explain all the paradoxical tendencies found in this policy, but so many are there
And there lies the weak point of this policy. This national education policy, my last question is whether it wants it continue true human being or true Hindus, real India, a secular India to be developed, or a new Bharat, that means new Hindu Bharat is to be developed by this educational policy. It is to be clear, and we want it to be clear from this policy. Who made this policy? Our central government. We are skeptical about one thing, whether it is national education policy or it is a political education policy developed by a particular polity, as we are now finding in our central government. This is the pertinent question to be raised about this policy. Here I finish my comments on national education policy. Thank you all. Congratulate. I convey my congratulations and best wishes to you all present here. Thank you very much, ma'am. Now I request to Govind Rajulu from Andhra Pradesh for 2 to 3 minutes. Please come. Govind Rajulu from Andhra Pradesh. So I can share some experience. During our preparation for this program, we came across so many experiences. अभी बार बार जैसे कहा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करना है. I think people are already aware about their future generation education. A person who was that ice cream vendor contributed 100 rupees from his earning for our movement. And he was very pleased to see the things कि हम लोग धूप में गर्मी में बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि what is NEP 2020. तो इसी तरह का एक 80 years की महिला ने 500 रुपीज निकाल कर दिया कि प्लीज गो फॉर योर वर्क, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. इसी तरह से एक 8 साल की बच्ची ने अपने पॉकेट मनी से 35 रुपीज. Where so many people who are earning in lakhs refuse to support us, the persons who are on streets and who are understanding our motive or our this struggle, they are wholeheartedly supported us. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ इस दौरान. तो ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो जिंदगी भर के लिए हमें याद रहेंगे और हमारे इस मूवमेंट को एक एनर्जी देंगे. तो अभी मैं श्री रामप्रीत फ्रॉम बिहार, I request him to come and express his view on NEP 2020 for 2 to 3 minutes. Shri Rampreet. मुझे 2 या 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करने को कहा गया है. मैं बता दूं, संक्षेपण में मेरी अच्छी पकड़ नहीं है, बल्कि आप विद्वान जनों से, विद्वत जनों से जो कुछ भी मैंने सुना उसकी व्याख्या करके और लोगों को बताने में मेरी रुचि लगी. इस वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं. उस समय 2 मिनट ज्यादा ही लग जा सकता है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो राजीव गांधी की आई, वहां से ही हमारे बिहार में
बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा की बर्बादी शुरू हो गई। और इसका दुष्परिणाम है, जिस बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर एलएस कॉलेज के प्राध्यापक होते थे, जहां से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लगाव रहा है, जिस पटना विश्वविद्यालय ने महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को पैदा किया, आज उच्च शिक्षा ही नहीं, जिसको हम कहते हैं फ्रॉम केजी टू पीजी, उसकी ऐसी दुर्वस्था हो चली है जिस पर ये तमाम ऊंचे शिक्षण संस्थान आंसू बहा रहे हैं। और स्थिति ये है कि बड़ी संख्या में क्लोजर और मर्जर पॉलिसी के तहत बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों को संसाधनहीन बता करके और बंद कर दिया गया है। अभी भी 1281 और स्कूलों को बंद करने की नीति है बिहार सरकार। हमारे यहाँ ऐसे ही संसाधन का घोर अभाव है। ऐसी स्थिति में पहले ही से शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, पहले ही से प्राइमरी एजुकेशन का तो और ज्यादा, और जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं वहां पहले से, वो सब के सब संसाधन विहीन है। ऐसी स्थिति में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये दूसरी कक्षा तक के बच्चों को उन आंगनबाड़ी केंद्रों में डाल देने का मतलब है उनको पूरी तरह से शिक्षा से वंचित रखना। आज जो भी संसाधन है, उस संसाधन में भी लगभग 3 लाख शिक्षकों के पद खाली है। भर्ती के नाम पर झूठा कुछ कवायद जरूर चलता रहता है और हमेशा ही यही प्रक्रिया बनी रहती है। कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, एक बार एक प्रतिष्ठित कॉलेज में मैं गया आज से 2 साल पहले, वहां कुल 15 विषयों की पढ़ाई होती है और शिक्षक सिर्फ 3। समझा जा सकता है कि कितना घोर अभाव है स्कूल शिक्षकों से लेकर के और कॉलेज शिक्षकों तक। और पहले ही से इस दुर्दशापूर्ण स्थिति में चलने के लिए हम लोग मजबूर हैं। ऊपर से इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो कुछ लाया जा रहा है, उसमें हमारी बिहार सरकार बढ़ चढ़ करके उसको लागू करने के लिए आमादा है। हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को देंगे ताकि वो शिक्षा से मरहूम नहीं रहे, वंचित नहीं रहे। लेकिन वास्तव में वंचित नहीं रहे कहने के लिए है, उन्हें वंचित करना ही उद्देश्य है शिक्षा से। तभी हमारे बिहार से जो आंदोलन 74 का चला था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसमें सबसे प्रमुख मांग थी राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। लेकिन आज हमारे यहाँ मुसहर विद्यालय चल रहे हैं, कभी चरवाहा विद्यालय और पहलवान कॉलेज तक खोला गया। अनुमान लगा सकते हैं जहां इस निजीकरण के दौर में 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख सालाना फीस लेने वाले स्कूल हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके यहाँ जो शिक्षक है, उनका जो क्वालिटी है, उसकी तुलना में वो जो बिल्कुल ही माने सबसे ज्यादा कमजोर तबका जो समाज का है, उनके टोले में नाम भी मुसहर विद्यालय करके खोल दिया गया। उससे उन्नति होगी, उनकी तरक्की होगी। बल्कि सरकार की जो नीति होनी चाहिए थी, जिसके लिए हमारे देश के आजादी आंदोलन और उससे भी पहले
रेनेसां मूवमेंट, पुनर्जागरण आंदोलन के मनीषियों ने ये मांग रखी थी कि शिक्षा जनवादी, वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। उसकी जगह जनवादी शब्द तो बिल्कुल ही बेमानी अब साबित हो रहा है। मनमाने तरीके से सब कुछ चल रहा है। ऐसी स्थिति में जब सरकार ही शिक्षा को बर्बाद करने पर तुली है, तो मुझे वो पंक्ति याद आती है जिसमें किसी कवि ने कहा कि मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, माझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। तो इस शिक्षा को जो हमारे कर्णधार हैं वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में आह्वान है किसी कवि का, और उस पंक्ति को दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि ईर पर्वत सी हो चली है, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, हो जहां भी आग, अब आग जलना चाहिए। इसी आह्वान के साथ हम लोग लड़ने के लिए निकले हैं। ये जन विरोधी, छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी शिक्षा नीति के खिलाफ। तो मुझे पूरा भरोसा है, भले ही ये गैदरिंग बहुत छोटा है लेकिन संपूर्ण भारत इसमें समाहित है। तो मेरा अटूट विश्वास है, मार्च वी विल, फाइट वी विल एंड विन वी विल। Next, I invite All India Civil Education Allama Bettadaru, मेरा कन्नड़ भाषण का अनुवाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नया क्या है। सारी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है और इधर हमारी सरकार किसी को समझाते हुए पार्लियामेंट के दोनों सदनों को कानों खबर न करते हुए नई शिक्षण नीति को लागू करना, यह अपना सर्वाधिकार दिखाने जैसा लग रहा है। इस काम में शिक्षक, अध्यापक, विद्यार्थी, पालक और शैक्षणिक तजों को अपने विश्वास में नहीं लिया गया है। 3 साल के बच्चे को आंगनवाड़ी जाने को यह शिक्षण नीति सूचित करती है। आंगनवाड़ियां बिना ट्रेनिंग लिए हुए शिक्षकों से चल रही है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी के इमारतें भी नहीं है। आंगनवाड़ियों को
चलाने के लिए जूझने वाले राज्य के सरकारों ठेकेदार का सहयोग मांग रही है। यह सरकार नहीं शिक्षण नीति के माध्यम से देश के शिक्षकों निजीकरण करना चाहती है। शिक्षा के लिए केंद्र सरकार 10 और राज्य सरकार 30% धन रिजर्व रखने के लिए हमारे जैसे शिक्षण प्रेमी चाहते हैं। पाठशालाओं का समुच्चय निर्माण करना यह केंद्रीकरण नियम हो गया है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ स्कूल रहना जरूरी है। देहात हो या शहर, पाठशाला रहना जरूरी है। जहाँ मुर्गी बांग देती है वहाँ स्कूल खोलने का गौरव अन्नाराव गणमुखी को मिलता है। ये हमारे कर्नाटक के शिक्षण मंत्री थे। बहु विषय बोधना कार्य में व्यस्त रहने वाले सबके सभी व विश्वविद्यालय जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, संगीत शास्त्र आज संस्कृत विश्वविद्यालय नाम से जाने जा रहा है। यह एक शर्म की बात है। 2 जिले में एक विश्वविद्यालय निर्माण करने से 100 कुलपति निर्माण हो जाते हैं। विद्या नैवेद्य बन जाएगा। विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय के मर्यादा को ठेस पहुंची है। यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीआई जैसे संस्थाओं को नाश करके उच्च शिक्षण निर्माण करना ठीक नहीं है। 3 वर्ष तक चलने वाले बीए, बीकॉम, बीएससी उपाधियों को कोर्स 4 वर्ष तक करके एमए, एमकॉम, एमएससी स्नातकोत्तर पदवियों को 1 वर्ष पर ही सीमित करना बच्चों का खेल जैसा लग रहा है। छठी कक्षा से ही जीवन कौशल शिक्षण देने की योजना तक से बाहर है, क्योंकि बच्चों की मानसिक बुद्धिमत्ता विकास होने के बाद ही जीवन कौशल शिक्षा देना ठीक है। 5वीं कक्षा तक बोधना माध्यम मातृभाषा या राजभाषा में ही होना चाहिए। ये बात नई शिक्षा पद्धति में कह जाने के बाद भी उसे अपनाया नहीं गया है।
पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जिन जिन के राजभाषाओं में ही शिक्षा होने चाहिए, इस निर्णय लेना चाहिए। इस काम के लिए संविधान में सुधार लाना ही चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आड़ा आता है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की कमर तोड़े बिना नई शिक्षण पद्धति लाना अर्थहीन लगता है। नई शिक्षण पद्धति त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादन करती है। जिन राज्यों में हिंदी राजभाषा है या मातृभाषा है, वे हिंदी और अंग्रेजी सीख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र उन्हें लागू नहीं होता। दक्षिण भारत के प्रांत में हिंदी को लादने का जो क्रम चल रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और इसी के साथ साथ संस्कृत भी हम पर लादी जा रही है। लास्ट पैरा। प्राचीन भारत के सांप्रदायिक विद्याएं जैसे गणित, खगोल शास्त्र, योग, वास्तुशास्त्र, औषध शास्त्र, कृषि, तांत्रिक शिक्षण जैसे विषयों को सूक्ष्मता और आलोचनात्मक पद्धति से मनन करके कार्य रूप में लाना जरूरी है। आज वास्तुशास्त्र के नाम पर घर को तोड़ मरोड़ने का काम ही जोरों से चल रहा है। पुरोहित शाही लोग इससे पैसे कमाकर लोगों में भय का वातावरण निर्माण किया है। वैश्विक सत्य घटनाएं मात्र पाठ्य पुस्तकों में बोधना विषय होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में और महाविद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कायम अध्यापकों का नियोजन नहीं हुआ है। सभी तरफ अतिथि अध्यापकों से ही काम चलकर अध्यापकों को शोषित किया जा रहा है। कम तनख्वाह सैलरी लेकर जीवन में भूखे तड़पने वाले उन शिक्षकों के पेट भरने का काम करना जरूरी है। इन अध्यापकों की नियुक्ति में भी राज्य सरकारों भ्रष्टाचार कर बैठे हैं। यह मानवीयता के लक्षण नहीं है। इसलिए पूर्ण प्रमाण से अध्यापकों की कायम नियुक्ति करने का काम पहले होना जरूरी है। नई शिक्षा नीति में नया कुछ नहीं है। शिक्षा का खासगीकरण, उदारीकरण और व्यवहारीकरण के ऐसे समय में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों अपने बजट में अधिक धन आरक्षित रखकर सार्वजनिक शिक्षण क्षेत्रों में
जैसा सरकार चलाने वाले स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में आर्थिक और बौद्धिक बल से सुसज्जित करने का काम पहले होना चाहिए। हमारे संस्कृति में गुरु को अपार गौरव तथा महत्व है। ऐसे कहने से नहीं चलता, उसे केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलजुल कर काम करके दिखाना ही पड़ेगा। नमस्कार। Next, I invite Professor George Joseph, an eminent educationist from Kerala, to deliver his address. Mr. Dr. Michael Williams, Dean Mount Carmel, is present here. I request him to come to the dais. My dear brothers and sisters from Kerala to Nashville, I am quite glad to be here on stage representing Kerala because it is from Kerala that this educational revolution should start. Because we have done a sin to you. That sin is nothing but the very chairperson of this new education policy is hailing from Kerala, and that too from the city from where I come, Kochi. And coming to that, beforehand I will congratulate the organizers of All India Civic Education Committee for selecting this very day, the very birthday of the great soul of India, Rabindranath Tagore, who asked us to hold our head high and to make our minds free and fearless. It is in this day, on his birthday, with his photograph on stage, that we hold such a historic, revolutionary Dharna in front of the Parliament, to the extent that we shall reach to Parliament in Jantar. My memories fly back to some 32 years back, when I was an youngster and doing a job as the additional private secretary to a minister in Kerala, who was belonging to the Jantar Dal, and I happened to come along with him to Delhi for the first time in my life. That was for the oath of office of VP Singh, our former Honorable Prime Minister. Lastly, also, I flew down to Indira Gandhi International Airport of Delhi. I have seen the premises of Delhi, the streets of Delhi, the environs of Delhi is rather clean, peaceful, and fine. But actually today, when I came to this Jantar street and entered into this area where we hold this Dharna, we shall see on the right and left, we people, the conscience keepers of the education, cutting across the entire state of India, is being barricaded on two sides. This is the state of the democracy in India today. This is the state of education today. The Parliament is to protect our rights, but the present governance is protecting the Parliament from us. The Constitution of India is starting its preamble by saying the word, "We the people of India." Now we the people of India is being barricaded on left and right and is stranded in the street, surveilled by the police. We find the police state here.
This is not a pride to every Indian. So our education is being changed. That is why I say we Keralites are ashamed of Kasturi Rangan, who may be in privacy, agreeing to us that I was only putting my signature last to the report, having no authorship at all, ownership at all. This is the way how the reports are coming out. I hope that you may be remembering the Kothari Commission report. How much of pressure Dr. M.C. Chagla, the then education minister, has laid on Kothari, Dr. D.S. Kothari, to accept such an adventurous commission mission. He was putting demands before the minister. He was chairing the commission. He was having the whole control over the commission report. And thus we got Dr. D.S. Kothari Commission report, the Magna Carta of Indian education. Now it is being done away with by the present rule. The governance is putting the masses in chains. This is a draft report which is going to be implemented, still remaining as a draft because it is not discussed in the parliament. We are not having access to the annals of the parliament. We can't even see the walls of the parliament. We can't even say to the parliamentarians about this. And their lips are tightly blocked. So now our country has become a police state. Our democracy has done away with its values. And this is a report and this is an education policy drafted, implemented by the rich, for the rich, and of the rich. This is not a report for the Indian masses. I shall very well say, I am a fellow formed by the public education. The very fellow who was sitting, say, nearby to me in my educational days, there are few fellows who may be doing the professional climbing up the trees of the coconut and maybe, say, plucking the fruits of it. He can call me by my bare name when I am going to my native village. He can stretch his hands to the shoulders of me with every freedom. And that was the secular education. Where went over this secular education? That is lost. Anyway, in the dark days of the COVID, government is making every trials to have this implemented without getting into the attention of the democracy lovers, then secular ethos lovers, as well as the education lovers of this land. I find the conscience of the country has come to this Dharna. And we will not relent to any kinds of such or danger in the case of education, because if we say this to you, if you are here in such a shape, that is for the guidance which the education has given to us. Suppose we minus the educational input in our personality. Imagine what we are. I conclude. Thank you once more. Thank you. Thank you much. Okay. Thank you, Dr. George Joseph from Kerala. He's an eminent educationist. Announced at the very outset of our program that this is the birth anniversary of the great poet Rabindranath Tagore. He was not only a poet, he was an educationist. He wrote so many articles on education, and there is a book on all his writings on education. Now, at the very outset, there are some songs and recitations composed by Tagore. Now I invite Sri Nityananda Das. He is a reciter. In Bengali, it is called Bachik Silpi. I call Nityananda Das to present.
Rabindranath said that the mind is the fear and hate is the heart. কিন্তু যেটা ভয় শূন্য যেটা শীল আজকে এই সমাবেশে এই মনে হচ্ছে everyone said it held high for saving education. Professor Nashkar said that they have restricted in 200 pages, but Rabindranath cannot be restricted by any means, by any laws. প্রত্যেকটি কবিতা এখানে সময় কম প্রচুর ডিসকাশন রয়েছে। অঞ্জলি এই তীর্থ দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইল সযত্ন চরণে সায়ান্নের শেষ আয়োজন যে পূর্ণ প্রণাম খানি মোর সারা জীবনের অন্তরে অনির্বাণ বাণী জ্বালায় রাখিয়া গেল আরতির সন্ধ্যা মুখে সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে হে মোর অতিথি যত তোমরা এসেছো এই জীবনে কেহ প্রাতে কেহ রাতে বসন্তে শ্রাবণ পরিসরে কারো হাতে বীণা ছিল কেহ বা কম্পিত দীপশিখা এনেছিল মোর ঘরে তার খুলে দুরন্ত ঝটিকা বারবার এনেছ প্রাঙ্গণে যখন গিয়েছে তোলে দেবতার পদচিহ্ন দেখে গেছ মোর গৃহতলে আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারই প্রণাম। নমস্কার। Now I call Dr. Michael William, educationist, Dean, Mount Carmel School, College, sorry. Dr. Michael William. Good afternoon, everybody. I must first say that I am delighted to be a part of this gathering. Something so important, perhaps the most important thing affecting the most important country in the world. And we are gathered here to discuss that. And I'm very happy to see that there are like-minded people over here who have come who share the same concern that we all share similarly as with the people who are sitting over here. Now, one of the things I want to say right at the beginning is that all of us over here are for education. All of us over here are very interested in ensuring that proper education is provided to every citizen in our nation. There is no question of anybody over here being counter to that, which means we will always welcome a forward-thinking policy by any government when it is based on the right principles of education. Nobody over here is opposing or has contradictory views to NEP without justification, because this particular NEP that we are dealing with is so mired in so many gray areas that not only has it left academia confused, it has left policymakers confused, it has left stakeholders, parents, and people at large completely confused. There can be no education policy that can ever be put out that should confuse people. There are some good things in the national education policy that we will all agree with. There is a good aspect of making sure that 9th to 12th becomes one cohesive unit, that all children get a chance to study science, history at different levels of academia through the last 4 years, so that they're able to choose at
college level, which is how it happens internationally in all the leading countries in the world. There's nothing wrong. In fact, we appreciate that. Many things in this you will find that the academics agree on. So what then is the problem that we have? I don't know where to start, but a better way for me to put this across to you would be that this is the first time in the history of independent India that there has been a government with such an urgent rush to bring in an education policy that 7 different drafts have been laid out within a matter of 5 years. It hasn't happened since the history of independence in 1947 that so many different varying education policies have been tossed at the people at the speed of light, and the entire nation and all the educationists given 15 to 30 days to respond if it is adequate. There is obviously something that needs greater retrospection and study on our part. My biggest problem with the education policy that we have, and I am holding up this document as reference for all of you to see, my biggest problem is that I do not trust the authenticity, the veracity, the source, the root of this document. I do not trust it because on the 29th of July, when the new honorable minister who was appointed to office that very day, when he was given office, he said that the cabinet committee has approved the national education policy. I was part of the group when this was announced, and a document was released to the media. This was the document that I got in my hands on the 29th of July at the year 2020. Now, this document, I beg your pardon, this one, National Education Policy 2020. Most everybody got this. All the journalists in the room got this, and we all started to study it. Next day, newspaper reports started coming out. Prominent educationist, Brother Charles Varia is here. Along with the Catholic Church, we started meeting to discuss this document. Just by sheer coincidence, sitting in my office on the 6th of August, I couldn't find my copy. So I logged into the government website. I said, let me download a fresh copy. And so I downloaded the fresh copy and I started reading that fresh document. So first of all, I noticed that the cover had been different from what was released. I said, I wonder why the cover is different anyway. The pages were about the same, 63 and 66. I said, okay. But it was unusual why the pages started to change. As I started reading the document that was released to the media and what is available on the website of the Government of India, Ministry of HRD, Ministry of Education, which should be the most transparent, clear, specific, honest department, because if we're going to cheat with education, there is no hope for this government or these people. I must tell you, the biggest hoax was done to the Indian citizen and the Indian Republic, because what got released and what is there today are two different documents. In my simple cursory going through these documents, I have come across over 300 such differences within this document and this document. 300 differences. Areas where the state was going to take responsibility, the state will provide, the word state has been removed. So many other things have been removed. But that did not surprise me. And the reason I started to research is because when the entire education policy notification started coming out, when TSR Subramaniam document first came out that we all read, that had been paid by our tax money, and it was a very comprehensive data which said very clearly English must be made mandatory to all people of India, from the poorest of poor to the richest of rich. All of these documents came out, things started to change. And I noticed one fine day when Srimati Irani was our HRD minister, that this document appeared on the Indian government website, which said some inputs for draft National Education Policy 2016.
Again, no author, no source, no date, but somewhere from heaven or earth or some other source was born a 55-page document that nobody could name who is the mother or father. An orphan child lay hanging on the Ministry of HRD's website saying, this is our some honest inputs for. So here you have a document which starts with the preamble and ends quite abruptly. It is filled with over 180 spelling and grammatical errors, which should not be happening on an education document. If you want to put it in English, please have somebody proofread. That's the most basic thing. But this is on the Ministry of Education that we had this rather embarrassing document that was put. It took a lot of research. But let me tell you, all research leads to finding out the source. We found the source for this. This is called the Final Vision National Education Policy Document. This was created by the University of Tribal Welfare at Amarkantak. This was created year 2015. From 2015, very slowly and carefully, the government was trying to bring about how can we introduce this to the masses without getting exposed. However, as dealing with the principal of a school and all other educationists will tell you, sometimes you know when the child is cheating. Although everything looks so good on paper, there are some things that give away that maybe this child has cheated. So when I took this child's answer sheet home and I compared it to the document over here, word for word, all 55 pages come from here. All the spelling mistakes are here. The same have been repeated here. The preamble starts with this, the same preamble. No comma, no full stop, run over sentence, same thing over here. We gave this to our members of parliament. I called a meeting for some of our members of parliament, including Mr. Kapil Sibal and from the Trinamool Congress, and I briefed all of them, and they held this up. And they said, shame on the education minister for plagiarism, which is the #1 crime in education today. And the government of India was guilty of the #1 crime of plagiarism. No matter how you hide, the truth always comes out. This is the truth. Now this new document, which is built on the Namodi framework, which uses certain abbreviations that we don't even understand. Where are these abbreviations coming from? Where are these terms? They're all explained beautifully over here. This document uses the world's largest pole vault, and from 500 BC, it brings us to the year 2020. It tells us how great the Vedic period was, what a wonderful contribution to the entire universe it did. And then it skips the entire Buddhist, Jain, Muslim, Christian education that was given. All the things that were taught, it completely skips over. It skips over the very basic fact that Raja Ram Mohan Roy, the builder of modern education of India, learned the concept of democracy while studying in English medium schools. We did not know democracy. In fact, when we became an independent nation, we were over 562 independent little countries. We did not like our neighbor. He may have been 4 kilometers away. It was a different country, can see different prime minister, different king. We did not know democracy. People had no power. They had no rights. We were deep in the caste system. You were born into something. You stayed into that something. This document says, hey, how about we bring those good old days back? It's time to bring those good old days back. At the 3rd standard level, allow the teacher to decide, is this child good enough to carry on, or should he start moving towards a slight technical education? Why don't we have a board exam and let the teacher decide that? Not the parent, not the marks. Let the teacher be the deciding factor. How about we try that again by 5th? And by 5th, we actually split it into technical streams. So 6th, 7th, 8th can be pure technical given to children. All right, why don't we do that? 8th, we will introduce another board exam, which forever will seal the fate of all of those children in rural India who will never be able to afford a higher education. This document does that. If we don't stand up today to oppose it,
And we might as well pack up and move out of here, because that is what is going to happen to our children. Any education policy should be foolproof for the next 70 years. But if you want to pick up redundant languages and say it is a must, the same importance as Greek and Latin, and tell me if it has a value 70 years from now, if our children will make a difference to the world if they only speak on an ancient language that has no science and no documentation and no books to be taught from. As a taxpayer, do I want institutions being set up only to translate into that language and come up with modern verbiage so that we are given new words to learn at a time when we need to be already in the education track at 100 miles an hour? Here we are saying, let's stop, let's turn around, look backwards, and try to race ahead. We will only crash into a wall that is being made over here. I have a lot of concerns about this entire national education policy. Lots of concerns. The biggest concern for me is that if you still, in modern India, do not realize that there is a huge rural and urban divide. And if you say one shoe size will fit all, you're already doomed. My child in the heart of a rural village in Chhattisgarh and Jharkhand does not have the same access to all the things as my child studying in a school in Vasant Bihar or in the heart of central Delhi or central Mumbai. They just do not have that access. If the education policy starts to say that these rural schools are non-viable and must be shut down, I don't understand an education policy that calls for the shutting down of schools somewhere in the villages of Uttarakhand, where the child has walked 6 kilometers and is only one of 15, where a retired school teacher is teaching him basic math, basic literature, basic calculation, and we're told it's not viable, it must be shut down. The child has no other option. Who are they to decide what is viable, what is not? Because this policy is certainly not viable, in my opinion. How can we shut schools down and call ourselves an education policy? This education policy really, really bothers me, and it should bother each and every one of you if you want to see India progress. I will tell you, my mother started Mount Carmel School in 1972 in the living room when my father was an Air Force officer. I was the second child to take admission in that school. That school today has over 21,000 alumni, has 7 branches, has today studying in it 10,000 children. One woman with one vision changed her life and changed the life of this city. Similarly, so many women of Delhi, whether they started Springdale School or New Era School, or whether they started Modern School or Tagore International School or Sri Ram School, these were women of Delhi with vision. The government never came forward and said, we'll give you the bricks for free, we'll give you the cement for free. In fact, they started levying property tax on each of these schools, but yet they have done a fabulous job in imparting education. This policy does not recognize any of these educators. It tells me the people who taught in 500 BC are the ones that we need to follow today. I will tell you, and I say it with no religious prejudice, but if the actions of the gurus from that time were to be replicated today, POXO would be applicable. If I was to cut the thumb of even one of my children, I would be arrested under POXO and given such severe sentences. Please don't tell me which education is to imitate when I have better examples. My time has run out. There is so much more to say. But this document I do not trust. This document is a fake and a forgery that has been created with a very different agenda, has no roots, has no source. I cannot depend on it. We need to fix our education. We need to fix our own policies. Please, this is the day. Stand up, raise your voice, and be counted. Thank you. Thank you, sir, for your very penetrating and showing many documents which exposes very clearly the real source of NEP, where from it comes, and what is the real motive and agenda behind it. You have very nicely explained, sir. Thank you, sir. Next, I would invite Dr. Maria Charles, one of the leading educationists,
and Secretary CBCI to deliver his address. Dear Dr. Piyaksha, dear Dr. A.K. Ray, and all the eminent educationists, my dear friends, after Mr. Michael has spoken, I don't think there is anything left to say, isn't it? He has spoken so beautifully, and about 90% of whatever I wanted to say, as he has already mentioned. The concern that all of us have, after having waited for 33 years or more for a new policy that would maybe envelope the opinions of eminent educationists all over the country. What had come out was in a quick manner during the COVID time, a new education policy on the 29th of July 2020, only to show that there are many areas of gray. Today, we wonder if this education policy serves whom. We who work in many thousands of schools all over the rural areas in India are very much concerned if these schools would exist tomorrow, if these children would be asked to drop out, or will they be asked to amalgamate with some other school? What can happen to the future of the poor and the marginalized in India? Will this education policy ensure their future or destroy their future? This is the biggest worry that all of us have. The three key words many of the eminent speakers have spoken again and again: centralization, commercialization, and communalization, isn't it? These are the three key words that are being said again and again about this new education policy. Dear friends, I came to register my protest, and I do not like to keep repeating the same arguments that the others have said so as to waste your time. But today we have a great soul of India, Rabindranath Tagore, on his birth anniversary. I would like to just, I'm reminded of a short poem which has always been there as an inspiration. May I say? Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where I'm sorry. Yes. Where the world has not been broken up into fragments of broken walls, where truth comes out from its depth and into the heaven of freedom, my father, let my country awake. Isn't it? It's a very popular poem that I remember of Rabindranath Tagore, and I think it's very meaningful to remind it today. Thank you. I would request all our participants, delegates to come to the come in front of the dais and occupy the chairs. I once more request all the participants to come and occupy the chairs, please. Next, I would request an eminent educationist, Professor Narendra Sharma from Delhi, to deliver his address. अध्यक्ष महोदय और साल के कोने कोने से आज इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। एक
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे नो एजुकेशन पॉलिसी जो इस देश के अंदर डाली जा रही है, तो कितने लोग समझते हैं? कुछ लोग जो अभी हमारे संपर्क में आए हैं या जो लोग अभी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, वो भी शायद इस पॉलिसी के डिजास्टर्स इफेक्ट्स को वो जान नहीं पाएंगे। ये हमारी कमजोरी भी है और कुछ हद तक हमारी उपलब्धि भी है कि हम जितने भी लोग आज जुटे हैं, हमको ये जो कुछ भी उपलब्धियां हमारी हैं, ये जानकारियां हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जनता के अंदर इनको लेके जाएं। क्योंकि आज अगर हम इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने धरना दिया, ऑल इंडिया धरना दिया और इतने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जितना पुलिस ने परमिट किया, अब ये हो गया है जैसे कि सेक्शन 144 लगाया जाता था तो आदमियों के खड़े होने की लिमिट बना दी जाती थी। उसी प्रकार आज धरना प्रदर्शन के लिए जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, जिससे कि हम अपनी जो लोगों की मुसीबतें हैं, लोगों की डिफिकल्टीज को सरकार के सामने रखे हैं और उससे भी हम हमें वो वंचित कर रहे हैं। ये ट्रेंड मुझे बहुत कम टाइम में बात करने के लिए कहा गया है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो बाहर से आए हैं उनको यहाँ आज कितनी मुश्किल है और कितनी दिन से वो बैठे हुए हैं यहाँ पर और उनको जाना भी होगा। तो इसलिए मैं इस बात को ये कहना चाह रहा था कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी ने जितनी भी आज तक हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी अचीवमेंट्स थी एजुकेशन के फील्ड में भी, विद मिनिमम एजुकेशन इंडिया के अंदर वी प्रोड्यूस द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट साइंटिस्ट एंड बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स हु आर वर्किंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये पॉसिबल जो था, ये गरीब से गरीब घर का बच्चा भी प्राइमरी स्कूल से, सेकेंडरी से और हायर एजुकेशन तक जाता था। मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है कि मैं घर से डांट लेके जाया करता था स्कूल में बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे टीचर और मेरी किताबें, उनके अंदर इतना घनिष्ठ संबंध था कि हम लोग कुछ सीखते थे। लेकिन अब इन लोगों ने शिक्षा को टीचर से अलग कर दिया, किताबों से अलग कर दिया। अब ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब है कि 95% ऑफ जो गरीब बच्चा है उसको शिक्षा से वंचित करना। केवल वो ही बच्चे जो जिनके पेरेंट्स लैपटॉप या ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके द्वारा वो एजुकेशन ले सके, लेकिन उसके लिए भी जब तक उनके माँ बाप खुद टीचिंग नहीं करवाते तो वो सीख नहीं सकते। इसलिए कोई भी किसी मशीन से तो टीचर का जो रोल है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये जो बड़ा ये षड्यंत्र है कि टेक्नोलॉजी से ये शिक्षा को प्रमोट कर देंगे, ये शिक्षा को डिप्राइव करने के लिए ये लॉजिक किया जा रहा है और इसको इम्प्लीमेंट बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। आज तक कभी भी ऐसे हुआ नहीं जो अब हो रहा है।
जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये फाइनेंस कैपिटल का दौर है, ये इंपीरियलिज्म का दौर है। इसमें आज आपको कुछ चीजें डाली जा रही है, पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये गवर्न कर रहे हैं हमारी लाइफ को कि हमें बाहर आना है या नहीं आना। ये सब बातें जो शिक्षा के मामले में भी जो पढ़ाया जा रहा है, नए नए बच्चों की किताबों को आप देखिए, बिल्कुल उल्टा पढ़ाया जा रहा है। बेस्ट टाइम एजुकेशन को लेने का लैंग्वेज लर्निंग के लिए या अल्फाबेट सीखने के लिए 3 से 6 साल तक होता है, क्योंकि अभी बच्चा टीचर से, स्कूल से सीखता था। लेकिन वो सारी अपॉर्चुनिटी उनको डिनाई कर दी गया। टीचर की जगह आंगनवाड़ी का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी ना के बराबर है, क्योंकि आज बच्चा जो है वो इन चीजों से कुछ सीख नहीं पाएगा। और अल्टीमेटली ये जो नो एग्जामिनेशन पॉलिसी है, नो पास नो फेल पॉलिसी जो है, ये भी इसीलिए ये बड़ा षड्यंत्र है कि हर आदमी ये समझे कि मेरा बच्चा अगली क्लास में चला गया, लेकिन उसने क्या सीखा है उसका कोई असेसमेंट नहीं है। ना माँ बाप को है, ना टीचर को है, और ना बच्चे को खुद है। वो तो बेचारा जानता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है उसके भविष्य के साथ। तो ये हमारी सभ्यता के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर ये बहुत खतरनाक ये खेल खेला जा रहा है। और इसके पीछे वर्ल्ड बैंक, WTO के अंदर शिक्षा को बेचने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। हेल्थ को बेचने के लिए कर दिया, और भी ऐसी चीजें बेचने के लिए। शिक्षा को, राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शिक्षा स्कूल जो है वो राज्य उसको फाइनेंस करेंगे, स्कूल्स को, उसको सबको प्राइवेटाइज कर दिया। जो नहीं हुआ अभी तक प्राइवेटाइज, बड़ी स्पीड के साथ होने जा रहा है। ये प्राइवेट पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है, या हमारे भविष्य की जनरेशन के साथ एक बड़ा भारी षड्यंत्र है, क्योंकि अभी ना माँ बाप को समझ आ रहा है, ना टीचरों को समझ आ रहा है, और ना ही स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, क्योंकि आगे जॉब ही नहीं होंगे। जॉब के लिए तैयारी नहीं किया जा रहा है। उनको कहा कि जब भी स्कूल छोड़ना चाहो, कॉलेज छोड़ना चाहो, आप छोड़ सकते हो। तो ये जो शिक्षा नीति है इस लिहाज से बहुत खतरनाक है। दूसरा, इसके अंदर जो हिस्ट्री को कर फेंका जा रहा है। अभी जैसे मैडम ने हमारे यहाँ भी चर्चा की है, सच्चाई जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की जगह माइथोलॉजी पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री की जगह वो फिक्शन पढ़ाई जा रही है, जिससे कि सच्चाई को ना जाना जाए। शिक्षा का आधार है साइंस, साइंस से हमें सच्चाई मिलती है। और अगर शिक्षा का आधार ही हटा दिया जाए, पूरी कोशिश ये की जा रही है कि साइंटिफिक एजुकेशन को इरेज करके एक ब्लाइंड एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए, यू डोंट क्वेश्चन एनीथिंग। साइंस के अंदर जो पढ़ाया जाता है, everything to the critical test of reason and then only accept what is right or what is wrong. लेकिन अब ये जो नई शिक्षा नीति के अंदर यू कैन नॉट क्वेश्चन, आप सवाल ही नहीं करोगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप लोग कभी भी सच्चाई को जान नहीं पाओगे, बल्कि मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो तीसरा ये है कि आज आप देखोगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजन को लेकर जिस किस्म का प्रचार किया जा रहा है, समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबको के अंदर बांटने की कोशिश की है। कल हिमाचल में पोस्टर लग गए, कल कहीं और लग गया पोस्टर मुसलमानों के खिलाफ, कहीं क्रिश्चियन के खिलाफ लगेंगे।
और इस तरीके से जनता आपस में इश्यूज को भूल जाएगी जो कि यहाँ पे हमने लिस्ट किए हैं, और ऐसी हालात पैदा हो जाएंगे कि लोग आपस में लड़ेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, कमर्शलाइजेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, और हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई है, जो और समस्या है, समस्या है, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इन समस्याओं के अंदर उलझे रहेंगे और ये शिक्षा को बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। शिक्षा ही है जो हर फील्ड के अंदर हमें जागृत कर सकती है, और हम इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर लेके जाएं। और ये भी कहा गया है कि ये एक है हमारा आज का धरना, इसको आगे ले जाने के लिए देश भर में धरने हो करें और जनता तक मैसेज को ले जाना। For the address. Next, I invite Sri Mantar an eminent journalist and educator from Punjab, to deliver it. इधर आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे विद्वान इधर बोल करके गए हैं। मेरा भी जितना एजुकेशन का अनुभव है मैं कोशिश करूंगा उनमें कुछ बातें करूं। इस धरती पे जो मनुष्य का पैदा होने का इतिहास है वो हमको पता है। इधर पशुओं की जातियां हैं, इधर ये जो वृक्ष है, वनस्पति है, नहीं गई है। वो बोलता है मैं इधर टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, एक स्कूल चलाना चाहता हूँ। वो फिर कितने ही सवाल करती है जैसे बच्चे करते हैं कि वो क्या होता है, एजुकेशन क्या होती है, स्कूल क्या होती है। वो जब दिलचस्पी लेती है तो वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह कितनी मुश्किल उसको आई, वो अपनी पहली स्टूडेंट के तौर पे उसको स्कूल में लेके आता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ एजुकेशन क्या है और एक टीचर क्या है। वो इस तरह उसको पढ़ाता है और
आगे आगे जैसे जैसे पढ़ती है उसके साथ रहता है। वो लड़की जिसने 12 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू की थी वो साइंटिस्ट बनती है उससे। ये है एजुकेशन ऐसे शेप देती है। हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। मैं ये मेरा सवाल है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी की तो बात करते हैं, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है क्या वो ठीक है? हम तो वो लोग हैं जो थोड़ा बहुत अपनी कोशिशों से पढ़े हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन से बहुत पहले या तो स्कूलों में जाना नहीं मिलता या फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये हमारे सिर में एक ऐसी चीज है, अगर इसको अच्छी आइडियाज नहीं देंगे, जो एजुकेशन के जरिए आते हैं, अच्छे लोगों की बैठक करने से आते हैं, तो ये बुरे आइडियाज अपने आप ले लेगा, ये खाली नहीं रहता। हम क्या बात करते हैं, रोने को दिल करता है। हम क्या देख रहे हैं, वो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो गया, उसमें कितनी गड़बड़ है, ठीक नहीं। मैं एक एजुकेशन की बात करता हूँ, अगर पॉलिसी ऐसी होती तो बच्चे विज्ञानी बन सकते थे, पायलट बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे। मगर वो हमारे बच्चों को क्या एजेंडा दिया जा रहा है? रामनवमी में क्या हुआ है? 9 तारीख को कानपुर में क्या हुआ है? हजारों नौजवान इकट्ठा होता है। कैसे होता है? कोई राम की वेशभूषा में आता है, कोई हनुमान की वेशभूषा में आता है, और एक साथ भी उनको प्रोग्राम देती है कि 2025 में हमने अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये होमवर्क हमारी जवानी को दिया जा रहा है। बहुत तरसजोग हालत है, आज से नहीं बहुत पहले से है। बाबरी मस्जिद किसी का क्या लेती थी? एक हमारी एक जो धरोहर है, हिस्टोरिकल धरोहर है, उसको मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए मिला दिया, कौन थे उसको तोड़ने वाले? वही थे जिनका दिमाग खाली था, जिसके दिमाग में ज्ञान तो नहीं था मगर कुछ और भर दिया था। कितने भी दंगा होता है, दिल्ली में होता है, कहीं भी होता है, वो कौन होते हैं मारने वाले? कौन होते हैं? वही होते हैं जिसमें दिमाग में एजुकेशन। अभी क्या है, अभी हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि जब एजुकेशन नहीं थी कुछ और दे दिया। वोट सियासत है, उन लोगों को अच्छे लोग नहीं चाहिए, उन लोगों को वोटर चाहिए। वोटर भी वो जो नशा लेके या लालच लेके वोट दे दे, या धर्म के नाम पे उनको मोटिवेट कर दिया जाए। तो ये सब हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम जो लोग थोड़ा धरती के साथ जुड़े हुए हैं, मनुष्य के साथ जुड़े हैं, अपने साथ जुड़े हुए हैं, बार बार हमको सिर जोड़ के बैठना चाहिए और ये सभी बातों का क्या हल हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ अपनी तौर से करना चाहिए। तो मैं इतनी बातें करता हूँ, मेरा टाइम समाप्त हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें करके, आपका सभी का धन्यवाद। Thank you, Professor. Next, I invite Prem Kumar Singh from Manipur to deliver his speech. I would request Prem Kumar Singh to restrict within 2 minutes. मैं मणिपुर से आया हूँ। जैसे कि अभी बैच में बैठा हुआ सभी गेस्ट को मेरी तरफ से प्रणाम। Actually, I am coming here from representing Manipur. So last month we have a press conference there, and from All India State Education Committee, Professor Pradeep Mahaputra and Professor Shubham come to Manipur.
we have highlighted in the media, and we meet different present secretary of the many student organizations in Manipur, and we have distributed our leaflet, we have presented books, we have tremendous support from the various organizations, and you know that our Manipuri language movement group, the civil society organization Milan, President, Secretary, and advisor also come, and we have discussed many things with Professor Subur and Pradeep Mahapatra. And after they gone to Assam, we have from our state committee, and within 6 months we are trying to make a state conference, and we will more mobilize in these few months, and we are planning to organize essay writing, many things. Program will be happen in future. So main thing is here that everybody has heard about the new education policy, but they are not politically passionate about this new education policy. And you know that BJP's frontal organization, they are working with RS people. You know that 2019 draft policy of the new education policy, they have published in our language. They have translated in our language. Main script is their Bengali script. So how much they are interested in this new education policy? Even they not highlight in the media also in under they are working very much hard working for the this new education policy. So we must understand it in this issue. And some last month that Amit Shah is announced in the media in the Northeast level, they will introduce up to class 10 in Hindi compulsory. So that is why in Northeast, many student organization, other civil organization processes that before Manipur student organization, there is MSO, there is MSF, like the 6 organization, their organization is known as Joint Student Committee. They have organized 26 April, public meeting is there in the Manipur. So in that meeting, our General Secretary, Takar Kiro also present there, is one of the guest speaker. So like that, we must go and took for many function, and we are touch with other people also. In future, we will do more things and more political concerns program will be held in the Manipur. So thank you very much for inviting me to speak some word in this voice. Thank you very much for. Thank you, sir. Next, I invite Professor Jitendra Meena, professor from Delhi University, to deliver his answer. थैंक यू साथियों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ। आज के दौर में जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मुझे याद आता है 2013 और 14 के जब लोकसभा इलेक्शन थे, इसको यहाँ पे रखे हुए। आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, वो बेच रहे हैं देश अपना, यहाँ रखो ना, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले वही काम किया देश को बेचने का, और एजुकेशन उनमें से सबसे प्राइम में है। जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन में बैठ करके इस पर बड़ी लंबी चर्चा कर रहे थे। हमने लगभग 500 पेज का एक ड्राफ्ट यहाँ मिनिस्ट्री में सबमिट किया था, और उसमें बहुत सारे सजेशन और बहुत सारी चीजें थी जिसको हम लोगों ने कहा था कि इनको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। अगर सच में आपको एजुकेशन पॉलिसी बनाने जा रहे हैं या एजुकेशन को लेकर के आपकी अगर थोड़ी भी चिंता है, तो कुछ चीजों को आप उम्मीद करते हैं कि शामिल करेंगे। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट आया, हमने देखा कि उसमें से कुछ भी शामिल नहीं किया गया।
ये पहली ऐसी पॉलिसी है जिसे बिना संसद में डिस्कस किए, बिना पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए, इसे केवल कैबिनेट के लेवल से टुकड़ों टुकड़ों में जारी कर दिया गया। और जब टुकड़ों टुकड़ों में जारी किया गया तो उन्हें मालूम है कि जिस दौर में इसे लाया गया वो कोरोना का दौर था। उस दौर में उन्हें पता था कि इस देश के लोग अपने अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कोई ऑक्सीजन को तरस रहा है, कोई अस्पताल में बेड के लिए तरस रहा है। और उस दौर में उस जालिम ने मौका देखा कि यही वो मौका है जब इस पॉलिसी को लाया जाए, और वो एजुकेशन की पॉलिसी लेकर के आए ताकि किसी तरीके का कोई विरोध ना हो सके। उन्होंने सिर्फ एजुकेशन का ही पॉलिसी लेकर नहीं आए, वो मजदूरों को लेकर के भी पॉलिसी लेकर के आए ताकि किसी तरीके का विरोध उन्हें नहीं झेलना पड़े। और जब वो पॉलिसी का ड्राफ्ट लेकर के आए, उन्होंने कहा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन हम जानते हैं इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें अगर कुछ नया है तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, ये न्यू एक्सक्लूजन की पॉलिसी है, जिसके जरिए इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित जो तबके हैं उसको शिक्षा से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। उसके लिए यह पॉलिसी लाई गई है। हम जानते हैं जब वो ये कहते हैं कि इस देश की एजुकेशन का 40% हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, तब समझिए कि इसी देश के राजस्थान में प्रतापगढ़ में पिछले हफ्ते हमने देखा कि अपने आदिवासी बच्चे 10 किलोमीटर पैदल चल करके अपने स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे। क्या ये एजुकेशन पॉलिसी प्रतापगढ़ के उन आदिवासी बच्चों को स्कूल तक लेकर के जाएगी? हम जानते हैं कि उन्हें ये उनसे उनका विश्वविद्यालय, उनका स्कूल, उनका कॉलेज बहुत दूर लेकर के जाएगी। उनके पास ये एजुकेशन नहीं देने जा रही है। हम जानते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में हफ्ते के जंगलों को बचाने के लिए आदिवासी लड़ रहे हैं, जब वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी उनके बच्चों को शिक्षा देने नहीं जा रही है। हम ये भी जानते हैं कि पिछले महीने जब बजट सत्र चल रहा था, गुजरात विधानसभा में एक एक्ट पास हुआ। उसमें कहा गया कि गुजरात के भीतर एक स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी अडानी के द्वारा स्थापित की जाएगी। उसकी डायरेक्टर मिसेज अडानी, प्रीति शायद उनका नाम है मैडम का, उनका एक बयान छपा और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इस देश का एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इस देश के अनुकूल नहीं है। प्रीति अडानी जी बता रही हैं कि इसका एजुकेशन सिस्टम इस देश की जरूरतों के मुताबिक नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। उसका मकसद होगा कि यहां पर जो है टैलेंट तैयार कर सके, हम लोग एक बहुत बेहतरीन ब्रेन तैयार कर सके। लेकिन हम जानते हैं ये बात कि उनका मकसद टैलेंट तैयार करना या ब्रेन तैयार करना नहीं है। उनका मकसद है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, उनकी यूनिवर्सिटीज के जरिए, उनके विश्व, उनकी जो उनका जो कारखाना है, उनकी जो फैक्ट्री है, उसके लिए सस्ता मजदूर तैयार करना इस पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। ये एजुकेशन पॉलिसी जब कह रहा है कि आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी, हम बड़े लंबे वक्त से कह रहे थे कि भाई एजुकेशन में ऑटोनॉमी की बहुत जरूरत है, लेकिन हम लोग कह रहे थे एकेडमिक ऑटोनॉमी की। उन्होंने इसका फायदा उठाया, आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी, और इस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का रिजल्ट हमने 2 दिन पहले हरियाणा में देखा, जब 153 करोड़ का लोन हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को दिया गया कि आप लोन लीजिए और पढ़ाइए अपने बच्चों को। हम जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी लोन लेगी, जेएनयू ने लोन लिया था, दिल्ली विश्वविद्यालय को लोन दिया जा रहा है,
तमाम यूनिवर्सिटीज और स्कूलों और कॉलेजेस को लोन के जरिए या प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें एंट्री दी जा रही है, उनका मकसद अपने मुनाफे की दुकान में तब्दील कर सके। हम ये भी जानते हैं कि उस लोन के जरिए जब वो लोन यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा तो उनसे सरकारें सूद समेत वसूल करेंगी। जब सूद समेत उनसे वसूल किया जाएगा तब होगा ये कि फी हाइक होगा, जिस फी हाइक का लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं इस देश के पब्लिक फंडेड एजुकेशन का प्रोडक्ट हूं। मैं इस देश के सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं। सरकारी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस से पढ़ा था। 2000 और 1000 फीस हुआ करती थी। आज की तारीख में दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के आसपास की तमाम यूनिवर्सिटीज को देखिए, प्राइवेट ईयर जो है फीस वसूली जा रही है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग, इस देश की 75% से ज्यादा आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि वो लोग कभी भी विश्वविद्यालयों की दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ी मुश्किल से, बड़े लंबे संघर्ष के बाद यहां तक हम लोग पहुंचे थे। हमें उम्मीद थी कि इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके के लोग, महिलाएं इन विश्वविद्यालयों में पहुंच करके इस देश की बेहतरी के लिए कुछ कर सकेंगी, इस देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगी। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनसे वापस उनका हक छीनने जा रही है। हम सिंपल तौर पर जानते हैं कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, एक्सक्लूजन की जो पॉलिसी है, दरअसल मनुस्मृति का नया रूप है। उसी का नया दस्तावेज है जिसे 21वीं सदी में वापस लाया गया और इसीलिए इसका विरोध करना जरूरी है। अन्यथा अब वापस उनको कानों में शीशा डालने की जरूरत नहीं है। वो बिना शीशा डाले आपको जो है एजुकेशन से बाहर कर देंगे और इसीलिए इस एजुकेशन को बनाए रखना और बचाए रखना पब्लिक फंडेड को हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कम्युनिज्म का जो खतरा है वो हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने हमारे हाथ से कलम को छीन करके, हमारे पुरखों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। हमारे जो पैतृक काम हुआ करते थे, जो हमारे पैसे वराना जिंदगी थी हमारे पुरखों की, उसे छीन करके हमारे हाथों में कलम और किताब दी थी। और आज जो स्थिति है वो हमारे हाथ से हमारी कलम और किताब को छीन करके तलवार देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वापस अपने स्कूल और अपने कॉलेजेस की तरफ जाना होगा और तभी जाकर के हम इस एजुकेशन को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनक्लास जिंदाबाद। Thank you, Professor Jantar. Next, I would request Martha Naskar to present a recitation from Rabindranath Tagore. নমস্কার। আজ আমরা এখানে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 বিরোধিতা করবার জন্য সমবেত হয়েছি। এখানে আগত সমস্ত ডেলিগেটদের এবং এই সভার সভাপতি এবং অন্যান্য বরেণ্য ব্যক্তিবর্গদেরকে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা জানাই। আজকে একটি বিশেষ দিন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। তারই একটি কবিতা পাঠের মাধ্যমে আমি তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব। বিপনা নগর রাজধানী সিন্ধু মরু, কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অবসরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন মনমোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তার এক কোণ। সেই ক্ষোভে পরিগ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাকে অক্ষয় উৎসাহে, যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি। জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে। আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি, এই রয়ে গেছে ফাঁক হোতান, কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ। দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নিমায় অশ্রুত যে গান গায়, আমার অন্তরে বারবার পাঠাইছে নিমন্ত্রণ তার। সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে, তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তর্ময়, অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়। পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার, বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন যাত্রাটি বসে তাঁত বনে জেলে ফেলে হাল। জাল বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার, তারই পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার। অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে। মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে, ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে। জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম কর্ণে ব্যর্থ হয় গানের পসরা। তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা, আমার সুরের অপূর্ণতা। আমার কবিতা জানি আমি গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী। কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন, কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন। যে আছে মাটির কাছাকাছি সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি। সাহিত্যের আনন্দের ভোজে নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারই খোঁজে। সেটা সত্য হোক, শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ। সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি। এসো কবি অখ্যাত জয়ের নির্বাক মনের মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার। প্রাণহীন দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার, অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমে রসে পূর্ণ করি দাও তুমি। অন্তরে যে উচ্চতার আছে আপনারই, তাই তুমি দাও তো উদ্ধারি। সাহিত্যের ঐক্যতান সঙ্গীত সভায় একতারা যাহাদের, তারাও সম্মান যেন পায়। মুখ যারা দুঃখে সুখে নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে, ওগো গুরু কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি। তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি, তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারই খ্যাতি। আমি বারংবার তোমারে করিব নমস্কার, নমস্কার। ধন্যবাদ। Next, I invite Professor Logarajan from Tamil Nadu to deliver his speech. I would request him to restrict within 2 minutes. Dear friends, within 2 minutes, what can be told, I do not know. Anyway, certain points I would like to tell you. Right, we are from Tamil Nadu, the state which spearheads this anti-people national education policy. Probably you all know, right? Certain very significant points I would like to tell in the shortest time. First point, in NEP2020, in all 60 pages, you can never see any analysis about the objective situation. Why this policy has been written, what for it has been written, what problem we are facing, say in Tamil Nadu, what problem we are facing, in Karnataka, what problem in regarding education, what problem we are facing, in say Uttar Pradesh, what type of problem they are facing. Such statistical analysis you will never be able to see in any pages of the document. This is number one. Number two, this is also another important point I would like to make it. When a man becomes animal, what differentiates man from animal? Just think about that. Simple thing is, the fundamentalism is such a thing that completely ruins human beings' heart and make man as beast. Education is the antidote for that, right? So education should be such, we should be able to inculcate humanness in a man. So this is the point. So what we observe in NEP 2020 is two main aspects. One aspect,
is in content. Every time, every page you can see, it tells the philosophy of that policy as ancient Indian wisdom. We all know what ancient Indian wisdom really means. This is their ideological framework. Then implementation framework, they completely centralized to the core, right? You can see centralization to the core. Regarding school education, in ECCI, they are telling right from the age of 3. You just imagine, for 3 years old children, they are going to create framework, right? Regarding higher education, you all know, whole education is going to be brought under one umbrella. Higher Education Commission of India is such a thing which is going to control, which is going to centralize everything. So whatever they would like to do, they will be able to do. Now you understand. Now already all speakers have told you all know. If we permit this policy to get implemented, then soon in 10 years or 20 years, we will not be able to see any human life in men. That is going to be the problem. Everywhere, now you yourself witness what fundamentalism is doing. That is going to happen in every nook and corner of this country. Whether are we going to permit that? That is the question before us. I extend my paternal love, greetings to all of you. With this verse I conclude. Thank you. Thank you, sir. Now I request to Dinesh from Himachal. Dinesh ji. Dinesh Sharma from Himachal. 2 minutes, for 2 minutes, he will express his solidarity with this moment. थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आप सभी को देवभूमि हिमाचल की ओर से प्यार भरा नमस्कार और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय का अभाव है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हमारे ऊपर थोपा गया है, इसके क्या दुष्परिणाम है, इसके ऊपर हिमाचल में अभी फुल जोर से कार्य किए जाएंगे और हिमाचल में भी ऑल इंडिया स्टेट एजुकेशन कमेटी का पूरा सहयोग किया जाएगा। I would like to thank all of you for this great startup, this great revolutionary startup. So thank you so much to all of you for हमें आपने यहाँ पर बुलाया। Thank you so much. Thank you, Dinesh. And now I request to Kalu Bhai Kharodia from Gujarat to speak for 2 minutes to give his solidarity to this movement. मंचस्थ महानुभाव और दूर दूर से अलग अलग स्टेट से आए हुए प्रतिनिधि, आप सब जानते हैं कि गुजरात एक प्रयोग भूमि बना दिया है। वो कोई भी सवाल हो वहां से शुरू होता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जो गुजरात मॉडल, रोल मॉडल की जो बात की जाती है पूरा देश पर, वो गुजरात में एजुकेशन की क्या परिस्थिति है उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। खास करके मेरे पहले भी बोला गया कि बिना लायकात के वीसी भी बनाया जाता है, तो उसका गुजरात में भी प्रयोग हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया वीसी को, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को। दूसरा, जो गांधी जी ने जो विद्यापीठ स्थापना था, उसी में भी जो वीसी अभी जो है उसको भी बोला गया है कि उसको निकाल दो। ये सुप्रीम का आदेश है, फिर भी उस विद्यापीठ तो लड़ रही है सामने।
और रिटर्न में नहीं दिया तब तक उसको नहीं निकाला, ऐसा भी बोला गया है। तो जो गुजरात में बीसी भी क्वालिफिकेशन के बिना आता है, ऐसी यूनिवर्सिटी वो क्या एजुकेशन देगी? ये है गुजरात की परिस्थिति। दूसरी जो बात है कि 16,000 से ज्यादा प्रोफेसर की जगह खाली है और बोल रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम उनको ये जून 22 से शुरू करना जा रहे हैं। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और जो 20 साल से फिजिकल इंस्ट्रक्टर की कोई भर्ती नहीं की गई, स्कूल में भी संगीत टीचर, ड्राइंग टीचर, उसको तो कब का ये भर्ती नहीं हो रहा है। और खेल महाकुंभ का नाटक किया जाता है और वाचे गुजरात, गुजराती में जो बोलते पढ़े गुजरात, ऐसा भी एक पूरा जुलूस निकाल के देश में चलाया गया था। तो ये जो बात है, और दूसरी बात यूनिवर्सिटी में रिसर्च की जो पोजीशन है वो तो बहुत खराब है। पूरा का पूरा रिसर्च कॉपी ही होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से कॉपी करके लाएगा, टाइटल चेंज हो जाएगा और पूरा का पूरा रिसर्च जो होता है वो है, इसलिए तो वो प्रकाशित नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी के वो कमरे में पड़ा रहता है। और कोई न कोई एजेंडा आरएसएस का जो है उसको लागू करने का, हल्ला गुल्ला शोर करने का, जैसे एमएस यूनिवर्सिटी में अभी हुआ कि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में देवी देवताओं का जो पेंटिंग बनाया गया उसके खिलाफ में विरोध किया गया था। और एक चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी जो आपने नाम सुना होगा, जो पहला पूरा देश भर में गुजरात में बनाया गया, पता नहीं चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी को क्या करने जा रहा है। तो मैं जाके पूछा वहां जो लेक्चरर है उसको कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो बोले जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में जो शिशु रहता है उनको क्या संस्कार देना चाहिए, ऐसी शिक्षा हम यहाँ दे रहे हैं। पता नहीं ये शिक्षा का क्या मीनिंग है। अभी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं एक और दूसरी ओर ये गर्भस्थ शिशु के संस्कार की शिक्षा की, ये यूनिवर्सिटी में 5-6 लेक्चरर भी भर्ती किए गए, उसको कुछ पता नहीं है। वो बोले जैसा जैसा कोर्स आएगा वैसा पढ़ाएंगे। तो ये है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, और बड़ा जोर शोर से बताया जाता है कि पूरा भारत में पहला यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर में गुजरात में बनाया गया है। दूसरी जो बात है, आपने बार बार देखा भी होगा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में भी, कि कोई भी एग्जाम हो पेपर लीक होता ही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो, चाहे वो स्पर्धात्मक परीक्षा की एग्जाम हो। तो ये भी एक फिनोमेना गुजरात का हो गया है। दूसरा है लाइब्रेरियन की 2000 से ज्यादा जगह 2009 से कोई भी भर्ती नहीं किया गया। और मैंने बोला कि पढ़े गुजरात ऐसा एक नारा लगा के, जुलूस लगा के पूरा बात कर रहे हैं। और 1666 स्कूल में लाइब्रेरियन नहीं है। कॉलेज में लास्ट कई सालों से कोई भर्ती नहीं हुए और 700 प्राथमिक स्कूल में एक ही टीचर पढ़ाते, और जो स्टैंडर्ड है 1 to 5, 1 to 8 तक है, वो कैसे पढ़ाता होगा पता नहीं। एक साथ एक टीचर इतना 5 स्टैंडर्ड को बिठा कैसे, एक कमरा होगा, 2 कमरा होगा, उससे ज्यादा कमरा भी नहीं है, तो कैसे पढ़ाता होगा। दूसरा है 2000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दी गई है विलेज में, और 28,200 टीचर की जगह खाली है, और अभी ऐड आई है सिर्फ 3,300। तो ज्यादा नहीं बोलने से मैं इतना ही बोलूंगा कि जो बढ़ा चढ़ा के एक जो बलून खड़ा किया है गुजरात मॉडल का, यही मॉडल है। कई टीचर कोरोना में सुसाइड करके मर गए, जो प्राइवेट स्कूल में थे, प्राइवेट कॉलेजेस में थे। और प्राइवेट कॉलेजेस की तो बात ही छोड़िए, उसमें 10,000 12,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता है। मुझे यहाँ मौका दिया गया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं हमारे बीच में ओम प्रकाश जी हैं हरियाणा से। आई रिक्वेस्ट टू ओम प्रकाश जी फॉर 2 minutes प्लीज एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट दिस मूवमेंट।
सम्मानित मंच के पदस्थ नेतागण और इस सभा में मौजूद देश भर के कोने कोने से आए हुए तमाम साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में मेरे से तमाम पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से अपनी बातें रखी हैं और मैं समझता हूं कि इसका विरोध होना देश भर के अंदर आज वक्त का तगाजा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर भिन्न भिन्न किस्म के प्रयोग हो रहे हैं। ये जो 2 साल आंगनवाड़ी में पढ़ाने का जहां तक सवाल है, इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू कर चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आंगनवाड़ी सेंटर है, ज्यादा से ज्यादा संख्या के सेंटर ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, वहाँ बिजली का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। वहाँ किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे? और जो पढ़ाने वाले जो आंगनवाड़ी हमारे कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं, उनको वेतनमान के सवाल को लेकर के भी आप पिछले दिनों अखबारों से देखे होंगे, लगातार 4 महीने तक स्ट्राइक किए, लेकिन सरकार के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रंगी। तो इन हालातों के अंदर किस तरह से बच्चों के जो स्कूली शिक्षा है उसकी बुनियाद को खोखला करने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। दूसरी ओर मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम के ऊपर कुछ एक तरह का एक प्राइवेटाइजेशन का ही, एक तो मेन स्ट्रीम है प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस, और सरकार खुद अपने स्तर के ऊपर भी एक तरफ सामान्य स्कूल है और दूसरी तरफ कुछ एक स्कूल हर जिला और ब्लॉक मुख्यालय के ऊपर इस तरह से खोले जा रहे हैं, जहां फीस के साथ, जैसा प्राइवेट स्कूल के अंदर ट्यूशन फीस लगती है, जैसा प्राइवेट स्कूल के अंदर इनरोलमेंट फीस और एडमिशन फीस लगता है, इसी तरह से हजारों हजार रुपया फीस लेकर के और सीबीएसई बोर्ड के साथ उनको एफिलिएट करके उनको पढ़ाने का ये इंतजाम, मतलब एक 2 तरह के नागरिक, 2 तरह के विद्यार्थी पैदा करने का, और बुनियाद से ही प्राइमरी स्तर से ही आज शिक्षा के अंदर इस भेदभाव को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो हम हरियाणा के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ, हालांकि अभी जिस माहौल के अंदर और जिस तरह के हालातों के अंदर ये शिक्षा नीति को पेश किए हैं, उन हालातों के अंदर देश के भी शिक्षा, खासकर हमारे प्रदेश के अंदर जो शिक्षक है और विद्यार्थी है, वो अभी तक भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं। और लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम इस आने वाले समय के अंदर ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी का जो मत है और जो इस देश के अंदर शिक्षा को बचाने की जो मुहिम शिक्षा बचाओ कमेटी ने छेड़ी है, उस मुहिम को जन जन तक लेकर के जाएंगे और ये जो हमारे सामने चैलेंज है, उस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हम पूरी तनदेही के साथ अपना प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। Now I request to Anant Behto from Jharkhand. Anant Behto from Jharkhand for 2 minutes. धन्यवाद। आज ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो लागू किया जा रहा है पूरे देश भर में, इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड का जो शैक्षणिक स्थिति है, खास करके शिक्षकों का घोर अभाव, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में एक टीचर से एक डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है। कॉलेज में बिना शिक्षक की पढ़ाई हो रही है। इस स्थिति में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया जा रहा है, ये हमको लग रहा है कि एकदम शिक्षा को मतलब जनता से एकदम पूरी दूर किया जाएगा। और जो फ्री हाइक का झलक मिल चुका है। कल का पेपर में आया कि जो कॉलेज में यूजी में एडमिशन के लिए जो फी है, ये एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म भरने का जो फी है, वो 8 गुना वृद्धि हो रही है। 100 रुपया
जहां एडमिशन जो अप्लाई करने के लिए जो 100 रुपया था वो 800 रुपया हो जा रहा है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए झारखंड सरकार, हम लोग सोचते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ला रही है ये पॉलिसी, तो जिस जिस स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस का है, या हमारे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गवर्नमेंट है, कांग्रेस के साथ मिला जुला है, वो शायद इसका अपोज करेगी। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। झारखंड सरकार 15 लोगों का कमिटी बना चुकी है और उस कमिटी को बोली है कि आप पूरे झारखंड में इसका ये करके रिपोर्ट होती है कैसे लागू करेंगे। और इस कमिटी का जो अध्यक्ष बनाया गया है, हमारी जो राजधानी रांची में बीआईटी मेसरा के जो कुलपति उनको बनाया गया है। रांची विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उसको मतलब सह संयोजक के रूप में रखा गया है। तो ये जो मतलब प्रयास है ये चल रहा है। फी हाइक का जहां तक बात है, कल आज का पेपर में आया, हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय बीएड का फीस 40,000 रुपया बढ़ा रही है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से पहले ही मतलब ये इसका झलक जो है फी हाइक का ये दिख रहा है। खास करके झारखंड में और एक प्रॉब्लम है, वो है इंटरमीडिएट 11-12 का जो एजुकेशन है वो मैक्सिमम अभी भी कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, स्कूलों में नहीं। कॉलेजों में इंटरमीडिएट 11-12 की पढ़ाई होती है, साथ ही साथ अभी स्कूलों में भी 11-12 की पढ़ाई शुरू किया गया है कुछ सालों से, लेकिन स्कूलों में सीट नहीं है। 11-12 में एडमिशन के लिए जो सीट मिलता नहीं है, सीट के लिए मारामारी होता है। हर साल सीट फुल हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग को एडमिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाने से कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि 9, 10, 11, 12 मिला के एक कोर्स हो, स्वतः तो बंद हो जाएगी। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हमको लग रहा है यहाँ पर मैंने 11-12 पढ़ने के लिए छात्रों को मौका ही नहीं मिलेगा। ये जो एक असमंजस स्थिति है, इसके खिलाफ में झारखंड में भी आवाज उठ रहे हैं। ऑल इंडिया सब एजुकेशन कमिटी की तरफ से वहां पर हम लोग भी कोविड के दौरान ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत सारा किए हैं और आज का धरना में हम लोग आज का धरना पर सहमति जताते हुए हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ में एक जोरदार आंदोलन होगा। धन्यवाद। So now I request to Govind Rajulu from Andhra Pradesh to show his solidarity to this movement. Govind Rajulu. 2 minutes, sir. Respected the members of the president and the participants from different states who have assembled here, and friends, we all know we have assembled here from different parts of India to register our protest against this National Education Policy 2020, and at the same time we demand the government to withdraw this disastrous policy. And from morning, we have heard the speeches of different eminent personalities who have dealt with different aspects of this education policy. How this policy is going to destroy the existing education system, and how this education policy is going to create innumerable problems within the present education system. And we have come to a conclusion that this policy is a blueprint of commercialization of education and centralization of education and communalization of education. And we have also come to know that different governments
maybe the BJP government where they are in power in different states, or it is a Congress government, or other regional parties, whoever may be, they are all actually implementing this education policy. Openly they are declaring and they may have some implementation of this education policy. In our state, the YCP government, led by Jagan Mohan Reddy, is actually implementing the NEP2020. From day one, when this education policy was adopted by the central government, immediately the state government started its implementation, particularly in the school education. Now in the school education, the primary structure, the so-called, they are claiming that we are bringing a structural change in the school education, so-called 5+3+3+4. It has been propagated like anything, as if it is going to create a revolution in the education system. But to see from that structural change, the state government of Andhra Pradesh has initiated a change. With that, they are actually shifting 3rd, 4th standards and merging in a high schools. Whereas in Andhra Pradesh, it is a tested system that we have a primary education from 1 to 5th. And from 6th to 10th is high school education. And now, because of this education policy and implementation of this education policy, the 3rd, 4th, 5th standards are being shifted to high schools, away from 3 or 5 kilometers from the villages where the children are decided for the poor people, common people. The parents who are afford to pay fee, they are joining in private schools nearby, or otherwise, the majority of the poor people, downtrodden, they are left no option to become a dropouts. This is the change that is going to happen in the primary education system. And the other way, the 1st and 2nd standards have been shifted to Anganwadis. We all know what is the purpose of Anganwadis. Anganwadis are meant for teaching the people, children, for the cleanliness and making them to habit for coming into the schools. Nothing else. It is a skin. Now the Anganwadis have become the part of the structure, and 1 to 2 standards, where the primary foundation for the education has to be established, that is being shifted to the Anganwadis. This way, the whole education structure, the foundation of the education system has been destroyed like anything. This is one aspect of the education system. The other aspect, particularly in the higher education, what we find is that the propaganda is going on that we are going to Indianize the education system. The other day, the Vice President of India, Mr. Venkaiah Naidu, speaking on the dais of a private university, Amity University, where his granddaughter has taken a certificate. Speaking on this occasion, he was telling that with this NEP 2020, and our education system is going to become a Indianization. Bharatiya Karna is telling. What Bharatiya Karna you are going to do with this NEP 2020? If you find from first page to last page of this education document, nothing but a copy and paste of foreign models. The semester system, whose model it is? It is a foreign model. CBCS, whose model it is? It is American model. And whose model is a multidisciplinary approach? It is the American model. And we are inviting a foreign university into the Indian education system. And they are telling of internalization of education. And linking the Indian education to the global market is the Indianization. In this way, the whole propaganda is going on. In the first time in India, our government has taken the task of Indianization of education. It is a bunkum of
Indianization. Nothing to do with Indianization. It is a simply copy and paste models of American models, American system. This has to be exposed before the people. Lastly, what I want to say that it is true that the government is not going to withdraw this policy. They are hell-bent on implementing this education policy. So to fight against this education policy is the need of the hour. So we have to mobilize public opinion. We have to mobilize the opinion of the academic community. We have to mobilize the opinion of the students community. Then only we can resist this education policy, and our Safe Education Committee throughout India, including in Andhra Pradesh, mobilizing the public opinion, academic community opinion, and fighting against this implementation of this education policy. And this Dharna is actually gives a call for developing a resistance movement against this NEP2020. With this, I conclude. Thank you. Friends, we organized this on birth anniversary of the great humanist and poet Rabindranath Tagore. We paid our tribute to him, and educationists from different states, they also spoke. Professor Kumkum Rai, historian and retired professor of JNU, she listens time to spoke, but due to lack of time, we could not accommodate all of them to speak. Now, at the end, I request Professor Dhubajyoti Mukherjee, INSEE scientist and a reputed geologist and scientist, he will speak. Before that, I just announce you that the booklets of AISCC are there, and the representatives from states, I request you to collect them from the stall. Professor Dhubajyoti Mukherjee. Professor Lakshman from Zakir Hussain College, he is present, and we are very sorry that we planned to conclude it within 2, but now it is 25 minutes past 2. So we cannot accommodate him. Very sorry for that. Professor Dhubajyoti Mukherjee. Friends, you have been listening to what this new education policy portends for our country. There is no need for me to add further details to it. The All India Safe Education Committee organized this Dharna from a sense of responsibility, from a sense of obligation to the people of this country. Our former Vice President, Professor Sushil Mukherjee, once said that once upon a time, our great men of the past, they used education to save the society. Now the time has come, education is in danger. Now the time has come to save education. It is the social obligation to save education. So we have assembled here to save education and the attack that is coming through new education policy. As a matter of fact, education has been under attack for a long time in our country. In the British period, the rulers wanted to use the education to produce slaves, to produce people who would serve the interest of the colonial powers, imperial powers. And in those days, our freedom fighters, our great leaders, our poets, including Rabindranath Tagore, they wanted to save the society through the education. And we still remember the words of Sir Ashutosh Mukherjee, who said that universities
cannot be the institutions to produce slaves. And he said that clarion call, freedom first, freedom second, freedom always. So, but this and then after the independence, the successive governments, through their education policies, have acted in a very consistent way that how the education or the general people can be kept away from the education, and how the content of education can be changed so that it serves the interests of the rulers. And now the final nail in the coffin comes from the new education policy 2021. I will not go into the details. I will just mention the 4 principal points on which the new education policy is attacking the people's interest, the people's cause. Firstly, through the large-scale opening the floodgates of privatization and corporatization, it is making education expensive so that a large section of the people are kept away from it. So this is a design to keep the people of our country educated, uneducated. Secondly, it is wanting to change the content of the education in such a way, in the name of our traditions, in the name of the so-called Indian knowledge system, they want to infiltrate all sorts of unscientific thinking, all sorts of religious bigotry through the curriculum of education into the minds of the young students, so that they do not acquire a scientific bent of mind, an attitude of rationality. Certainly, they want to have an extreme centralized control over education, which is the hallmark of fascism. And this centralization over the education comes in various ways, through the Higher Education Council, through having the National Curricular Framework, to having the Central University Entrance Examination test. I do not enter into the details of all of this, but they wanting to cartel, they want to have cartel the autonomy of the institutions and bring them all under a central administrative control, under the control of the ruling dispensation, so that they can freely implement their heinous policies. And a test of that we are finding in what the BJP ruled organizations in Vishwabharati in West Bengal, the true premier institutions which are targeted by the Hindutva bodies as their experiments of Hinduizing education. Finally, they are carteling all financial. The government is trying to shade its responsibilities of educating the people. It has been long-standing demand from the Safe Education Committee. Also, we said that the 10% of the budgetary allocation should be for education and 30% of the state allocation should be for education. But if we go into a little bit of statistics of what it has been doing, from the allocation of budgetary allocation from 2014 to 15, the allocation was 4.6. To that 4.6%, that was the total budgetary allocation. Of that, 4.6% was allocated for education. Mind the word allocation. And from that, the allocation has come down to half of that, 2.3% in 2021. But the actual expenditure
is even less than what was allocated. So in 2015-16, it was 3.7%. To 2020-21, it has become less than 2%. So in this way, by carteling the allocations to education, the government wants to hand over the education to private operators so that they can freely use their corporate interests they can freely make the education serve their corporate interests. Friends, the policy is such that we cannot say that a little bit of tinkering of this clause or that clause will make that policy acceptable to us. As highlighted again and again by the All India Safe Education Committee and the demand which has been placed by both Devashish Roy, the introductor, and Professor Anish Rai, the General Secretary, that we reject the new education policy in total. We want a new education policy to be formulated anew to serve the people's interest. We reject the new education policy altogether. And friends, a great responsibility has come on us on the All India Safe Education Policy to carry forward this movement of scrapping the new education policy at a time when the BJP is hell-bent to implement its policies one by one in a hurry. So the responsibility is on us, and you heard a song of Tagore, Akla Chalo Re, but you are not Akla, you are not alone. The people of India are with you. You have only to reach them, to bring them under your fold, and to make them understand the heinous policies of the new education, the heinous aspects of the new education policy, and then organize a massive people's movement to scrap the new education policy and demand a fresh education policy be formulated with people's interest by mind, people's interest in mind, and framed by people who are the educationists, who are the students, who are the beneficiaries of the educations. That is all. Thank you. And once again, giving a call for sharpening your struggle for advancing the cause of education. Thank you. Now I thank you, sir. Now I request to Ramesh Parashar ji. Is he here? Ramesh Parashar ji, who will conclude this our protest dharna with his beautiful song "Roko Shiksha ke Vyapar ko Roko." Ramesh Parashar ji. Thank you, leaders of the dais and friends. You might be remembering that there was a conference held in, I think, 1998. Dr. Sushil Mukherjee presided over that convention, educational convention, All India Civil Education Convention at Parallel Bhavan. And I was asked to write a song for that. And this was a theme song for that convention. And after that, it is being used and sung whenever there is education programs. I request if you can participate in the song, that will be good. रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको, रोको रोके रोके शिक्षा के व्यापार को रोको,
रोको निजीकरण के प्रहार को रोको। अफसरशाही के चंगुल से शिक्षा को आजाद करो, शिक्षा को आजाद करो। ऐ धर्म के ठेकेदारों, ऐ धर्म के ठेकेदारों, ऐ धर्म के ठेकेदारों, शिक्षा से तुम दूर हटो। इनके सांप्रदायिक प्रचार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको। वैज्ञानिक जनवादी शिक्षा यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा ये अधिकार हमारा है, सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा ये अधिकार हमारा है। शिक्षा संकोचन के वार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको, शिक्षा संकोचन के वार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको, रोको, रोको। मेहनत कश को शासक बारूद का ढेर समझते हैं, बारूद का ढेर समझते हैं। मेहनत कश को शासक बारूद का ढेर समझते हैं, बारूद का ढेर समझते हैं। इसीलिए ये शिक्षा की चिंगारी से डरते हैं, इसीलिए ये शिक्षा की चिंगारी से डरते हैं। रोको इनके स्वेच्छाचार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको, रोको इनके स्वेच्छाचार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको, रोको शिक्षा के व्यापार को रोको, रोको निजीकरण के प्रहार को रोको, 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 रोको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पाराशर जी। तो रमेश पाराशर जी के हर विषय पे, सामाजिक विषयों पे, सांस्कृतिक और शिक्षा के विषयों पे बहुत सारे गाने उनके YouTube चैनल पर है। तो इसके साथ ही इस सुंदर गीत और एक डिमांड के साथ कि हमारी शिक्षा को बेचने से बाज आइए, उसका सांप्रदायिकरण करने से बाज आइए, उसका संघर्षण करने से बाज आइए, वरना जनता सड़कों पर होगी। ऐतिहासिक किसान आंदोलन का एक प्रेरणा लेकर हम सभी और छात्र सड़क पर होंगे। और इसी के साथ हमारा ये आज का जो एक बिगुल बजा है, इस आंदोलन को घर घर गली मोहल्ले नुक्कड़ तक हम सभी शिक्षा संस्थाओं में पहुंचाने का एक अहद करते हैं, एक निर्णय लेते हैं और एक प्रतिज्ञा लेते हैं। तो सभी साथी अभी एक नारे लगाने के लिए तैयार होंगे और इधर आएंगे। आप ही लगा दीजिए, आपको अनाउंसमेंट कर दो। तो कुछ किताबें जो हमारी नई शिक्षा नीति की यहाँ पर रखी हुई है, प्लीज आप लोग ले लीजिए और इसको अपने पढ़िए और पता करिए कि ये क्या है। तो साथियों, नई शिक्षा स्टेट इंचार्ज अपने अपने स्टेट की संख्या के हिसाब से किताबें ले ले, जो कि यहाँ पर रखी है। और सबसे अनुरोध है ये अपनी बुक ले लीजिए। तो बस अब क्या करूं, हो गया बैक कर लो।
एक बार